Good morning, Anupma. I can see the name of Khushbu. Has Avinash ji joined? Convener of the seminar? No, ma'am, he hasn't joined yet. Okay. Is our chief guest and chairperson of the program? Can't see. जी ज्वाइन कर लीजिए जी और हमारे चीफ गेस्ट और सेक्शनल प्रेसिडेंट we might take just a few more seconds or minutes, I would say, before we begin with the formal session of this morning, which we've termed as a special session. Good morning, Khushbu. Ma'am, I'll just check with Dr. Rakhi also. Oh, yeah, please do. The papers would be presented once the chief speakers and our chief guests have spoken, and then we'll give you Okay, at enough time, yes. Good morning, Amit ji. Yes, Rakhi is joined. Ma'am, she's already joined. Yeah, She's already joined. I can see. Thank you. Good morning, everybody. Good morning.
Good morning, everyone. Good morning. ऋचा, Hello. चाय चाय बनाना तो हमको भी थोड़ा सा देना। जी, चाय आप आबू धाबी में पी रहे हैं? जी जी जी, मैं बिल्कुल बेटी को Morning. कह रहा। Very good morning. थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और Ma'am, good अपॉलॉजी कि morning. हम लोग यहाँ से आपको चाय नहीं ऑफर कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। जी, कोई बात नहीं। चाय पे ही चर्चा आज होगी। बस बिल्कुल बिल्कुल। इट्स a privilege and pleasure जी, both. thank you and All right. it's our privilege to have you with us. No, thank you, ma'am. Thank you very much. So we were just waiting for your presence. Okay. Can we? Yes, and I'm also waiting for Avinash ji to be there. Medhika, our foreign delegate, has also joined us, Yes, right. and she'll be speaking about Thoreau and Gandhi, and Medhika. next Medhika. Medhika, yes. Yes, Is she from Italy or somewhere yes, else? yes. She's from Italy. Okay. She's done her master's and research from UNO. Okay, that I can see from the Yes. brochure. Yes, from the program. Yes, So it's a she's good there, opportunity. and- Yes, Yes, and Right. Sameer Kumar would also be joining us soon. He's also from Italy, from Sicily. He's joining us today, and he very would good. be talking about the influence of Mazzini and Gandhi in the Correct. initiatives. Very So, good topic. Very good topic. Yes, yes. Yes, very interesting. And on a very Very short interesting. notice, he has agreed to join us. So it's a Uh, privilege to have him who- here with us. The question is, who will disagree with you, ma'am? You have all the right and privilege. Right. Only day before yesterday, I could hear you. Oh, thank you. Right. Very good. Very good. Since you are there, so it's so encouraging for me. I can't. Yes, I express am it. with my daughter and son-in-law. Oh, Uh, thank you. Are they there? Yes. So they'll be Yes. also a part of this program. then. Okay, right. Yes, why not? So Sanjay ji is here. Sanjay Swarnkar sir. Professor Sanjay Swarnkar ji. Namaste, madam. Ji, namaskar sir. Good morning. Good morning, And we ma'am. are privileged to have you here with us, sir. Yes. So, प्रमोदानंद जी के साथ आपकी बात हो रही थी और मैं सुन जी, रहा जी। था। जी बहुत अच्छा, it's always a pleasure, sir. सर, नमस्ते सर। Yes, Good morning and नमस्ते, namaskar. नमस्कार। तो बस अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करने की ही सोच रहे हैं. I hope बिल्कुल। कि Avinash ji has joined us, the convener of this 2-day international seminar. जी। Ji. And gradually the participants would be joining us. The COVID did bring us to a different world altogether. Yes, It has in a gone- way. Yes. This is just one of the positive things Positive that has come out of impact this of the whole. COVID. Yes, we can connect across the world. Yes, across globally. the world. Yes. So Avinash ji, are you there? The convener of our seminar? जी मैडम लिंक पे जी हैं जी जी, तो हम लोग अब एक औपचारिक शुरुआत करें. जी जी,
प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी ने कहा है कि वो जरूर ज्वाइन करेंगे हम लोगों को, थोड़ा विलंब होगा उन्हें, जरूर जरूर। ज्वाइनिंग अस लेटर। आपके लिए उन्होंने कहा है कि मुझे आना है और फिर से एक बार And इसमें I missed him yesterday. yes we'll send you the recordings. All right, So, that will be fine. yes, That will be yes, nice that to you. we would do. Yeah, We would yes, do that yes. much. So, with the convener's permission, we should now proceed with the program. Shall we? Shall we, Avinash ji? So, couldn't hear his yes. हाँ मैडम स्टार्ट किया जाए। जी, thank you. Under the auspices of IQAC, that is the Internal Quality Assurance Cell of BD College, and under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, we thought about organizing this international seminar. And this is the second in a row. The earlier one was on the idea of nationalism that was held in November 29th. So, Honorable Vice Chancellor, Patliputra University, Professor R.K. Singh, our chief patron of the 2 days international seminar on Gandhi and his philosophy revisited, with his permission and the permission of our patron, Principal BD College, Professor Praveen Kumar, we begin with the program. Respected Chairperson and our chief guest, Professor Pramodanand Das ji, former distinguished professor of Patna University in the Department of History, who has a long following of students over the long period of time, and anybody, even the joint secretary of the seminar, said that he has been taught by you and he's your student. Yes, right. Dr. Kumar Pandey. So you have a tradition of being categorized in one of the most popular and distinguished teacher with your academic feats, sir. Thank you very much. Thank you very much. Respected sectional president, distinguished guest of the seminar, who is working relentlessly in his pursuit, is Professor Sanjay Swarnakarji. He is working in KBG College, very prestigious, and working a lot of commitment is there in his work. He's also a member of the Swaraj Sansthan in Madhya Pradesh, and he's a part of the मध्य एशियाई अध्ययन, जैसा मुझे ज्ञात होता है आपके कार्य से कि आप उसमें भी बहुत सक्रिय हैं, सचिव हैं, और अकादमिक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व योगदान आपका हम पा रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार आपके प्रति व्यक्त करते हैं। और esteemed collaborator and convener of the seminar, Dr. Avinash Kumar Jha, is also here with us, and I'm sure that he would be once again providing the historiographical insight on the theme that we have chosen and would deliberate more on it. Our foreign delegate, Medhika ji from UNO, from United Nations Inter-Region Crime Justice Research Institute, is here with us today. She's in Turin, Italy, and she would be speaking on the inextricable philosophical link between Gandhi and Thoreau. Our second foreign delegate, Samir Kumar, in the scientific field, and serving in Italy. Today he would be speaking from Sicily, and he has joined to present his views on Gandhi from a perspective in which the influence of Mazzini on Gandhi would be brought about by him. I welcome our dignitaries, Professor Sanjay Kumarji, Government College, Uttarakhand, Satpuli is the place where he is there.
If he is there with us, we are glad to welcome you, sir. I welcome other dignitaries, Professor Anuradha Jaiswal, Dr. Ratna Amrit, Dr. Sister Celine Krasta, the head of the Department of Patna Women's College, Dr. Jasmine Kant, Dr. Anupama, and others, Kushbu, Smita, who have joined us, and all delegates and participants to this special session. And we are all joining in the virtual world of the two-day international seminar, as I've mentioned, on Gandhi and his philosophy revisited. We chose 30th January to deliberate on Gandhi and his philosophy revisited, to pay homage to the sole force who laid down his life for the cause for which he stood. The conviction in Gandhi that no other decision but dying was possible if the declaration of freedom was unachieved is what that brings us to January 30th, 1948. I quote Gandhi, "Call no man happy until he is dead." It's a Socratic philosophy. Inspired by him, Gandhi stood the importance of self-sacrifice and the art of dying. And we have gathered here to pay a humble tribute to Mahatma, the father of our nation, to Gandhi, if we want to call him that way, as India marks the Martyrs' Day on January 30. I remember that at the time of his death, a siren would go on and we would maintain silence for 2 minutes, but it's not possible for us to do so on this virtual platform. Therefore, we just pay a due regards to him, our homage and tribute, and then move forward with the program. Let us begin on this note that Gandhi replaced the linear and monolithic discourse of truth and reality. He brought many layers. A multi-layered thought is there behind his thinking, his philosophical choice of non-violence, vital to the existence and moral progress of humankind. He understood and theorized non-violence as a mode of upholding truth and believed that there was no concept of defeat in non-violence. Even if you don't achieve or attain the objectives, you are not defeated. You stand upright for the cause that you are standing for. So his attempt to spiritualize politics by reconciling political power with higher principles of morality as non-violence could take us to a level of ontological transformation. जहां हम ontological transformation की बात करते हैं, तो गांधी का जो ये विचार था कि हम यथार्थ में कैसे ये परिवर्तन ला सकें जो स्वयं से हम में आए, और एक यथार्थवादी होने के रूप में, एक रियलिस्ट होने के रूप में उन्होंने इसी पर अमल किया, ontological transformation, क्योंकि उनका मानना था that it would be beyond class, race, and religion. Ahimsa became the guiding principle of his politics to resist colonial power in a vast and deeply divided society as well. For this cause, Gandhi was aware of willingness to suffer. As to him, if we go into the depth of it, as to him, suffering opens up the inner understanding in man, as he felt suffering has tremendous educational and transforming possibilities. Because if you undergo this experience, it changes your inner self completely.
It subordinates politics to moral conscience. And this is what other Western and Oriental thinkers of his time, uh, after him and before him, have also come up with. So I would say that the Gandhian project, I would call it as such, of ethical responsibility, of the ethicalization of politics that Gandhi stood for, should stay in our mind when we are revisiting his philosophy. Gandhi today stands for collective conscience, and we'll always need him when there is a crisis in our collective life, as he taught us the art of questioning. Because to him, questioning the political institutions was important. Questioning was important to him for the civilizational growth. That is where he took questioning to be. And from questioning, he provided space for dissent. He became a practitioner of dissident citizenship. And that is why wherever that protest, that resistance was there, it had the credo and the balance of non-violence and truth behind it. The force of morality was seen in perhaps every belief, every policy, every movement that was carried under him. We find in his manifesto, Hind Swaraj, his belief to take into consideration the otherness of the other. Today, we believe more in the otherness, in exclusion. And in this, he adopted a dual approach. First, suffering for others was, of course, there. And on the other, relieving others from suffering was what he stood for. A thought on which a foreign delegate, Medhikaji, would be deliberating further. He was deeply aware of the inherent instability of democratic rule, which tends to fall into populism and majoritarianism, on which our honorable keynote speaker delved yesterday. Gandhi's emphasis on civic and emphatic republicanism should not be ignored, on which many philosophers have supported this view. Hannah Arendt, Chomsky, George Orwell, many others. He addressed the structural roots of violence. He saw violence as a law of life, that it would be there, to non-violence as a law of our being. In the Gandhian philosophies, this difference, this distinction was made by Gandhi. So in the Gandhian philosophy of resistance, we can find the intertwining of non-violence and exemplary suffering. These are the ideas that we wanted to share. I share this with a sense of fulfillment that many of the papers have brought about these views that are there regarding the thoughts of Gandhi. And regarding this, I would also like to talk very briefly as to how Gandhi was influenced by the treatise of Henry David Thoreau on the duties of civil disobedience. It was Leo Tolstoy who influenced his mind to serve the poor, by showing the concern towards the poor. And when he made a study of Plato, it made him establish a certain relation between truth and soul. And there he disessentialized man, and he takes us, uplifts us to that concept that soul has the power to recognize truth. And that is why he always emphasized that listen to the small, still inner voice that you have within you. Make it the guiding principle of your life. And therefore, truth or satya was the central
axis of the Gandhian system of thought and practice. He also understood that non-violence would remain in democracy, and for the functioning of democracy, we notice that he was of firm conviction that democracy has to work on the principle of protection of the minorities, not on exclusion, but based on inclusion. He also was firmly influenced by the Bible in his prayers and at times accused of being a crypto-Christian. And Trideep Suhrid quotes him from his volume 31 of the collected works, that it has been his idea that he recognized the teachings of Bible. His philosophy of resistance, which we'll be emphasizing on, we can find the intertwining of non-violence and exemplary suffering. And here I would say that Kant's influence was also there on Gandhi, because he did the groundwork for metaphysics of morals. So morality has a special place in the thought of Gandhi, on which we would all be deliberating. And just to conclude my viewpoint, I would say that I share this with a sense of fulfillment that many of the papers that have been brought, that has brought out, in fact, the fundamental thought of Gandhi, which are applicable in diverse forms of a social, political, and cultural life. I would also like to share with a chairperson and distinguished guest the book that we have brought about, if it can be seen on the screen. It's in the form of an edited book that we have brought about, and it brings forth those ideas which would make it as a compendium of the thought of Gandhi. It speaks about Gandhi, where to him truth was his leitmotif and guiding credo. Satyagraha was his principal mode of action, based on which we find his real mass mobilization and mass movement, like non-cooperation, civil disobedience movement, Quit India, with the mantra of do or die, as it was the inner voice that he followed, or the soul force, I would say. So the evolution of Gandhi's thought has been brought about. The Hind Swaraj has been studied and written by many of the authors. The communal question has been raised by Professor Imtiaz Ahmad. The manifesto of the dissent of Gandhi has also been brought about. His lesson in environmentalism, which carries an essence of Gandhi, has been brought about by Jasmine Kant. The sartorial experience in the colonial India and the culture of Khadi and Swadeshi has been brought about in the writings of Anupama ji. He was an educationist, has been brought about by Pratibha, a primal economist, a Gandhian Satyagraha and women's movement, on which I have also tried to give my viewpoint within the broad paradigm of his philosophy, and Gandhian thoughts on peace and his relevance has been traced to the COVID times as well, within the concept of Sarvodaya. So located in many pieces of literature also, we find that Gandhi has been made the central figure with Prem Chand, Dushyant, and many other literatures of the time. And his historic Champaran Satyagraha, as is being conducted from Bihar, has also been taken into account. And these are the valuable ideas that has been shared and compiled in the shape of a book, that is The Philosophy of Gandhi Revisited. So with this brief introduction, I would say that we held this two-day international seminar, and this joining together of all of us in this virtual world has
given us the opportunity to deliberate further and delve deeply into those aspects which remain untouched in the previous day deliberations. With this view, I now would like to welcome our distinguished guest and our distinguished guest and our chief guest, in fact, and our chairperson of this special session, Professor Pramodanand Das ji, who is here with us. And we are honored and humbled by your presence, sir, by your scholarship. We are all aware of your deep scholarship, and we would be honored by the thoughts that you would be sharing with us, sir. So I now welcome you to give your address, inaugural address to us of this day, so that we can be a part of this whole idea that revolves on Gandhi and have a further and more comprehensive view about this whole theme that we have formed, and we are looking forward for your address, sir. Can you hear me, Sunita ji? Yes, I can hear you, sir. Thank you. Okay. Thank you very much, Sunita ji, for your kind words for me. I am really beholden to you for honoring me. I am not a scholar. I am still a student That of is your Gandhian modesty. studies. Oh, thank you very much. My dear Professor Sanjay Swarnkar ji, Professor Anuradha Desawal ji, Professor Sanjay Kumar ji, Madam Ratna Amrit ji, Jasmine Kant ji, my sister Celine, Professor Avinash Kumar ji, Professor Imtiaz Ahmed, a very good, a very dear friend of mine, who has also joined this deliberation, I can say it. I am very happy that many participants, because this is a digital seminar, and I think for me only, Sunita ji has made this arrangement. Sunita ji wanted that I should become a part of the seminar, but I showed my inability, and I told him that I'll be out of country, I'll be abroad. But I'm very happy that by arranging this digital seminar, webinar, I'm being given this opportunity, I'm being given this honor. I know that this 2-day seminar is being organized by the Department of Philosophy in collaboration with Center for Gender Studies, Patna. And this is international seminar, as I could understand. And Professor Avinash Kumar Jha ji is a regular holder of international seminars. And he is a person in Bihar who is doing something at least. Because all of us know the dismal state of education in Bihar, we all of know. I don't have to deliberate on that. Madam, you have just shown me a book titled Gandhi and His Principles, Gandhi and His Philosophy Revisited. And you just deliberated that very kind words, very warm words have been expressed
have been commented upon Gandhi that Gandhi was father of the nation. Gandhi was Bapu to many. And I also join you all on his Balidan Divas because 74 years back, he was gunned down. Just now, my friend Gopeshwar Singh, a great literature of Hindi, who was head of the Department of Hindi, Delhi University, he has just put a verse on his Facebook which reads, Gandhi Baba जात रहली बिरसा बिरला भवन में रहिया में छिपल रहे नाथू बेईमन में एक गोली मारलस दूसर गोली मारलस तीसरे पर छूट गए अरनवा गांधी बाबा जात रहले बिरसा भवन में बिरला भवन में. So Gandhi was shot down on 30th January 1948. We all of know. This is being celebrated as a Shahid Divas or Balidan Divas. But friends, let me start with not very good words about Gandhi. We all of know, and for me particularly, I regard Gandhi was the only and one and only leader of modern India. He was a Masiha, he was a savior, he was a redeemer after Mahatma Buddha and Mahavir. But he was not a good soul. He was not a Mahatma. In fact, he was a Duratma, as he has been painted by some scholars. I would not say that all of them are historians. They were not professional historians. They were actually businessmen. And they also paint down something under some ideology. I mean, people like Sitaram Goyal, people like Sushil Pandit, people like Professor Shankar Saran, and most importantly, I am shocked, I am bewildered that my dear old friend, Madhu Kishwar, who was my batchmate in JNU, you all are apprised with her brilliant piece on Gandhi and Women, which had been published in Economic and Political Weekly. And she was a great admirer of Gandhi. She, in fact, established very vehemently that Gandhi was the sole liberator, sole emancipator of women. As Sunitaji was telling, that she has worked on women and Gandhi. I feel she must be aware with the writings of Madhu Kishwar. She is a great writer. Her books have been published by Oxford University Press. Recently, I saw a YouTube entitled Gandhi Se Moh Bhang Kyon. And in that YouTube, being conducted by Madhu Kishwar and joined by Professor Shankar Saran and people like Sushil Pandit, they chastise Gandhi like anything. They say that Gandhi was a crook. And Madhu Kishwar repents that she took so much long time to know real Mohandas Karamchand Gandhi. He was not at all a father of the nation. A man who could not father his 5 children, how can he be a father of the nation?
No saint worth the name ever called him Mahatma. Only people like Rabindranath Tagore and others, Muhammad Pir Munis, Rajkumar Shukla and others, saw Mahatmahood in Gandhi. Gandhi was a stooge of British imperialism. Because your title of the seminar, I divide in two parts. Gandhi revisited and Gandhian philosophy revisited. So first of all, we revisit Gandhi. We say that Gandhi was a noble soul, and as Professor Sunita Sharma ji has rightly observed in so many words about this philosophy, about the theory, in nutshell, what about Gandhism was. And she was comparing Gandhi. Gandhi owes a lot. Gandhi was indebted to Thoreau, Leo Tolstoy, Emerson, Ruskin, and so many other political thinkers and activists, literatures of the West. Gandhi was also conversant with the details of Christianity, details of Islam, and details of Hinduism. And that way Gandhi followed Ramakrishna Paramahansa. Gandhi said that religion, particularly Hinduism, does not stand for exclusionist outlook of the world. It has always been Vasudhaiva Kutumbakam in Hinduism. Hinduism is an all encompassing religion. Many religions came and went from India, but Hinduism stood like rock. And Hinduism is still going flawless. But like Ganga, Hinduism has also become Mela. Sunita ji, I was just deliberating. I was just delineating the bad words. I start with bad words from Gandhi. In the very beginning, I said that Gandhi was the greatest leader, greatest reformer. I say reformer. He was not only a political activist. Before that, he was a social reformer. Gandhi had a very keen sense of Indian society, Indian polity, Indian religion, and whatnot. Gandhi was against Westernism. Gandhi was against the fad of Western culture. Gandhi regarded Western culture as a disease. Gandhi said that the earth can fulfill every need of yours, but the earth cannot fulfill the greed of yours. So Gandhi was never after greed. He was never in favor of greed. I'm just narrating, just deliberating. So bad words for Gandhi. Gandhi was a stooge for British masters. The British masters used Gandhi. And Madhu Kishwar says that Gandhi fought against British imperialism, so-called fought, for 45 years, both in Africa, South Africa, and India. And no attempt was made on Gandhi's life from the British master's side. But what happened during 169 days? Yesterday I was
listening to a talk being organized by Professor Anand Kumar, one of my friends of JNU, and the main participant was Professor Sudhir Chandra. Sudhir Chandra exhorted us, यार बुढ़े की बात तो सुन लो. Professor Sudarshan Iyengar. Let me begin. How much time I will get, Sunita ji? You take your time, sir, please. Okay, thank you. Thank you very much. We are delighted to hear you. No, just I'm putting my things, but my ideas are disjointed. Forgive me for that. No. I have many distractions. So, Professor Sudhir Chandra, who worked in AMU, who worked in BSU, who worked in Jamia Millia Islamia, and he said that he is not a Gandhi Bhakt, but he is still trying to understand Gandhi. And to his understanding, the people of India, the people of the whole world should look forward to Gandhi. So Gandhi needs a revisit. Everybody knows, I will not deliberate, I will not go into details of Gandhi's philosophical ideas. Gandhi put 11th point program, 11th fold paths. Like Ashtangik Marg of Gautam Buddha, Gandhi had 11 points. Satya, Ahimsa, Asteya, Aparigraha, and other points. 11 points Gandhi put forth for the redemption of India, for the redemption of the people of India and the people of the world. Gandhi said that he is not fighting for the cause of Indians only. He is fighting for the establishment of better humankind. Gandhi has been forgotten, or you can say anything. Or Gandhi has been a part of vilification campaign by some scholars, some ideologues. People like Madhu Kishwar. Particularly, I am angry with Madhu. She has been a good friend. Radha Kumar and Madhu Kishwar, both are feminists. You people are quite Very acquainted with their works. They have done excellent works. And what has happened to Madhu Kishwar? Madhu Kishwar का मोह भंग हो रहा है. और Gandhi did a great betrayal to the cause of Hindus. क्योंकि गांधी ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण उनके लाश पर होगा, और उसी गांधी ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया. And probably he was the one person who could know about the partition first. This is what so many scholars hold. Gandhi accepted partition. जब कुछ होता है गांधी रिटोर्ट करते हैं, गांधी फास्ट अनटू डेथ पर जाते हैं. गांधी ने पार्टीशन के खिलाफ आमरण अनशन क्यों नहीं किया? This is a great question. Because when you revisit Gandhi, you revisit in some context. What is the scene of India? What is India today? I think India is marching towards, some people say, majoritarianism. Some people say the fundamental values of the Constitution are being distorted, are being destroyed. And where are we heading to? Gandhi is R.K. Narayan, some many years ago, wrote a novel. R.K. Narayan, we all are aware with him. He is the famous novelist, brother of
R.K. Lakshman, the writer of the famous Nobel film Guide. He wrote a novel, Waiting for Mahatma. Waiting for Mahatma. And I agree with him. I joined his tune and I implore Mahatma, आ जाओ. Mahatma, come back. क्योंकि Gandhi is dead. We always say, long live Gandhi. गांधी जैसे लोग आज भाई हितेंद्र पटेल जी का एक डिस्पैच देख रहा था फेसबुक पर. उन्होंने लिखा है, जो लोग समाज में राजनीति में चमकते हैं उसी के साथ उनका अवसान भी हो जाता है. उनके लिए आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता है. जो लोग एक सार्थक मूल्य के साथ जीते हैं वो कभी नहीं मरते हैं और वो मरने के बाद अमर हो जाते हैं. मुझे लगता है ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब हम गांधी की याद नहीं करते हैं. हम अपने फोर फादर्स को नहीं जानते हैं. मेरे बाबा के पिताजी कौन थे हम नहीं जानते हैं. लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता है. आज 40 साल से गांधी को पढ़ा रहा हूं, गांधी को पढ़ रहा हूं, गांधी को समझने की चेष्टा कर रहा हूं. बट गांधी इज ए वेरी इनिग्मेटिक पर्सनैलिटी. स्टिल ऊपर से हर आदमी एक्सपर्ट है गांधी का. Who did not know Gandhi and his ethics and his philosophy? And everybody says, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. इस साबरमती के संत did great amount of injustice to another great freedom fighter, a follower of militant nationalism, that was Subhash Chandra Bose. Madhu Kishwar and Professor Shankar Saran say that Gandhi started Quit India movement only to thwart the activities of Netaji Subhash Chandra Bose. And they say that, मैं सुधीर चंद्र जी को सुन रहा था. सुधीर चंद्र जी ने कहा कि यदि गांधी को समझना है, यदि गांधी के माइंड को समझना है, माइंड ऑफ गांधी, उनकी एक किताब है सुधीर चंद्र की. मैं आप सभी मित्रों से कहूंगा कि आप उसे पढ़िए. वो है गांधी एक असंभव संभावना. क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्कॉलर्स, हम लोग क्या करते हैं, जो 10 मार्क्स किताबें हैं, if we had to discuss Gandhi and his philosophy, we open the pages of Gopinath Dhawan, the political philosophy of Gandhi. We go to late lamented Professor Vishwanath Prasad Burma. I had requested the Bihar government to refer his name, to recommend his name for Padma Bhushan. And what to talk of Padma Bhushan, he did not get even Padma Shri. Professor Harish Sharma, Professor B.P. Verma, they were the gems, not only of Indian literature or intellectual world, rather they were international personalities. So we cannot respect their intelligence. And I was telling you that if you want to know Gandhian philosophy, you cannot escape Gopinath Dhawan, because Gopinath Dhawan was a contemporary of Gandhi. He was a keen observer of Gandhi's activities. And Gandhi said, you judge me, the people of India will remember me due to my works, not for my speeches and not for my writings. My life is a message, as Sunitaji said. Gandhi said, my life is a message to humankind. And I cannot be limited to a certain political, geological, or geographical boundaries. When partition became a reality, Gandhi said, I belong to both the nations, both the countries.
I belong to Pakistan. Pakistan is as much mine as Hindustan is. And when the government of India refused to give 50 crores of rupees to Pakistan as promised, Gandhi chided Sardar Vallabhbhai Patel like anything. Am I talking to that Sardar? Sardar of Bardoli. So these detractors of Gandhi, they are pulling Gandhi's leg, that they say that Gandhi did great injustice to Sardar Bhai Patel. Gandhi, great injustice to Netaji Subhash Chandra Bose. And Gandhi was a dictatorial personality. Even Jawaharlal Nehru at one point of time remarked that Gandhi had certain dictatorial streaks in his personality. People like Vinoba Bhave at one point of time observed that Gandhi was a crank. Crank, you know? Gandhi was a faddist. Gandhi had his own fads. गांधी सनकी है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है. गांधी में consistency नहीं है. He is not at all consistent. Like Karl Marx. Karl Marx also did not have consistency. He was evolving. Gandhi was evolving. Gandhi of 14 years, a student of school, was not Gandhi of 1947. Gandhi was evolving. In the beginning, Gandhi supported caste system to an extent. Gandhi supported Varnashram system, Varna system that had some values for Indian society. Gandhi did not want to wreck Indian society all on a sudden. Gandhi did not challenge because Gandhi did not believe in rituals. Gandhi had the abiding faith in truth. And he said that truth is my God. Truth brings me near to God. Truth is God, but God is not truth. God is formless. God can be realized only. And God is omnipresent. God is omniscient. Gandhi declared himself in one of my articles, which I published by UNESCO, Gandhi and his religion. The very opening line of my article says that Gandhi declared himself as a Sanatani Hindu. Sanatani Hindu, Gandhi called himself. So, did Gandhi believe in the rituals, the karma-kands of Brahminical order? Not at all. Gandhi did not believe in idol worship. Gandhi was very much influenced by his mother, and from his mother's side, his maternal uncles or fathers, they were the followers of a particular sect, and that was known as Prananathi sect. In that sect, temple is there, but within temple, within Garbhagriha, there is no idol. There is no, कोई मूर्ति नहीं है उसमें. मंदिर जाते हो, गांधी क्या करते थे? गांधी हमेशा प्रार्थना करते थे. गांधी बिरला मंदिर जाते थे, जहां उनका जान भी गया. उन्होंने प्राण गंवाया वहां पर. लेकिन गांधी प्रार्थना करते थे, क्योंकि गांधी का जो हिंदुइज्म है, वो तीनों वैसाखियों पर आधारित है. कर्मकांड, कर्म, ज्ञान और भक्ति. Gandhi was a fine blend, fine medley of three salient features of Hinduism, from right from Adi Shankaracharya to Madhvacharya to Ramakrishna Paramahans and Vivekananda. They all influenced Gandhi.
as Sunita ji was telling that scholar Mediti is going to deliver a lecture on Gandhi and Thoreau, and Professor Samir Kumar is also deliberating on relationship or the influence of Majni on Gandhi. No doubt Gandhi was influenced. बाप रे अंग्रेजी में हो रहा कौन बोल रहे हो मित्र मेरे? कि कोशिश कर रहा हूं, कभी कभी अंग्रेजी भी बोल लेना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। एनीवे, तो मैंने कहा कि गांधी हिंदू थे। गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, लेकिन गांधी का हिंदुइज्म जो था वो इंक्लूसिव था। मित्रों, आज देश में हम क्या देख रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। अमृत पान हो, टर्निंग होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम देश को क्या गांधी के बताए मार्ग पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, गांधी का तो साथ शुरुआती दौर से ही लोगों ने छोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू हैड वेरी वैलिड, वेरी in-depth discussion and difference with Gandhi. And he did not believe at his heart in Gandhian economics. He was influenced with Soviet Russia and Stalin's 5 years planning, heavy industrialization, mass production by a few. मित्रों, ये जब मैं कह रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि आज जिस तरह से हम इंटरनेट के युग में हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम हैं, जिस तरह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, चूंकि गांधी ने तो एक तरह के साम्राज्यवाद के अंत में सक्रिय सहयोग किया था, लेकिन आज दुनिया किस तरह से फिर एक बार गुलामी के जंजीर में जकड़ गया है, और जिस तरह से हमने अपने को गिरवी रख दिया है। मेरा भी बेटा काम करता है मल्टीनेशनल्स में, 16 से 17 घंटे काम करते हैं, और भी लोग मेरे हैं, और मैं देखता हूं कि क्या तो सैलरी बहुत अच्छा है, पर्क बहुत अच्छा है, लेकिन 25, 30, 40 साल होते होते जीवन का नीरस हो जाना, वैसे लोगों के लिए गांधी को रिविजिट करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जो जनरली ये कहा जाता है कि जो साइंस के लोग होते हैं उनको सोशल साइंस से क्या लेना देना होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं मित्रों आपसे कि आज की दुनिया में, मैं भारत में नहीं कह रहा हूं, मैं गांधी को इंडियन पेडेस्टल पर नहीं रख रहा हूं। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज की है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से हम अपने क्लाइमेट को चेंज करते जा रहे हैं। आंख मूंद कर इंडस्ट्रियलाइज करते चले गए हैं दुनिया को, और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड से हम घुट घुट करके मर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग, जो 15 साल की लड़की, या और भी कई मंचों से मैं सुनता हूं, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा अपने एड्रेस में, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे सदात, उन्होंने अपने एड्रेस में कहा कि मुझे गांधी की आज बहुत याद आ रही है। नेल्सन मंडेला, डिस्मंड टूटू जिनका डेथ अभी हाल में हुआ, तंजानिया के एक्स प्रेसिडेंट जूलियस नेरे, मार्टिन लूथर किंग, जो बड़े बड़े रिफॉर्मर और बड़े बड़े एजिटेनिस्ट रहे हैं दुनिया में, सबों ने, चाहे वो रंग भेद हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, या सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो, जहां कहीं आंदोलन की बात होती है
जो ग्रीन मूवमेंट के एक बहुत बड़े फिलोसफर है एनिक नेसेस, उन्होंने कहा कि मैंने अपने फिलॉसफी को डेवलप करते हुए, क्योंकि गांधी का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट या गांधी का कोई डायरेक्ट राइटिंग इन्वायरमेंट पर नहीं है। आप लोग इसकी भी बात करते हैं, सुनीता जी बात कर रही थी, और उनकी पुस्तक में उस पर भी बड़े बड़े लेख हैं कि गांधी और नेचर, गांधी व्यक्ति, समाज और सृष्टि की बात करते थे। वीएस नायपाल जो नोबेल लॉरेट रहे, आप जानते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया अपनी पुस्तक में कि गांधी के ऑटोबायोग्राफी में, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में, कहीं भी प्रकृति की चर्चा नहीं है, कहीं भी फ्लोरा और फौना की चर्चा नहीं है। गांधी डज नॉट टॉक अबाउट you can say trees. Gandhi never talks about vegetation and Gandhi never talks about nature. नार्सिसिज्म जिसको कहते हैं, गांधी का आइडियोलॉजी है। हमारे मित्र कहिए, सीनियर कहिए, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, उनकी भी किताब एक पढ़िए आप, हाल की जो किताब है उनकी, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। उन्होंने भी गांधी की काफी प्रशंसा की है, लेकिन दो तीन बातें उन्होंने कही गांधी से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, दो तीन बातों को कह करके मैं सर एक्सक्यूज दो मी तीन- सर, वो बुक का नाम फिर से बोलेगा सर? प्लीज अभी नहीं। किसकी किताब का नाम कहा जाए प्लीज? पार्डन मी। सर Whose book? रामचंद्र गुहा के जो रामचंद्र सर गुहा की रामचंद्र किताब है। गुहा की। यस, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। करीब 1128 पेज की किताब है। रामचंद्र गुहा पोथी लिखने में विश्वास करते हैं, उनकी हर मोटी, किताब होती है। लेकिन बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से लिखते हैं। दो तीन बातों को लिखते हैं वो। पहले रामचंद्र गुहा की भी बात कर लें। रामचंद्र गुहा is a great admirer of Gandhi, and he regards Gandhi as the topmost leaders of the world in modern times. But he is not a blind. आपने इस किताब के बारे में पूछा तो इस किताब की खासियत ये है कि आप सभी लोग जो लिखते हैं मोस्टली गांधी को नरेट करते हैं, तो गांधी का जो कंप्लीट वर्क्स है दैट रन्स इनटू 100 वॉल्यूम्स। गांधी को प्रोफेसर शंकर सरन जो गाली देते हैं, उनकी अहिंसा और उनके सत्य के बारे में कहते हैं, शंकर सरन तो कहते हैं कि गांधी तो सत्य के साथ प्रयोग करते रहे और असत्य का काम करते रहे। गांधी एक कायर थे, और उस पर हमारी फ्रेंड मधु किशोर जी ने कहा कि ही वांटेड टू इलिमिनेट द ह्यूमन माइनकाइंड इन इंडिया। गांधी ने यहाँ के पुरुषों में स्त्रैण गुण, स्त्री सुलभ गुण, क्योंकि गांधी कायर थे, और गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस, इन सारे शब्दों में नॉन जुड़ा हुआ है, तो इसको ये निगेटिव सेंस में देखने की चेष्टा करते हैं। जैसे हम लोग नॉन अलाइनमेंट के बारे में कहते थे, तो ये जो नॉन शब्द है, तो खैर शंकर सरन जी की चर्चा बाद में भी करूंगा, आगे भी होती रहेगी, क्योंकि ये लोग डिट्रैक्टर्स हैं, और कहीं न कहीं मुझे बोलना चाहिए कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड, और आरएसएस लेड गवर्नमेंट जो है वो गांधी का चश्मा छीन लेती है। बुरा नहीं मानिएगा, मैं मजाक में कह रहा हूं। स्वच्छता मिशन के लिए गांधी का चश्मा ले लिया जाता है, बिकॉज गांधी बिलीव्ड इन क्लीननेस। कल मैं एक क्लिप देख रहा था, किसी एक वक्ता का, महिला वक्ता का सुन रहा था, और गांधी की क्लीननेस, स्वास्थ्य को लेकर, बीमारियों को लेकर किस तरह से गांधी के विचार थे उसकी चर्चा कर रही थी, बड़े सुंदर शब्दों में कर रही थी। तो खैर रामचंद्र गुहा को आप देखिए, रामचंद्र गुहा कहते हैं कि गांधी डिड नॉट हैव
फ्लॉलेस पर्सनैलिटी। फ्लॉज की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि दोनों बातें होनी चाहिए। यदि गांधी का मैं भक्त हूं तो गांधी के खिलाफ B.R. नंदा, जो गांधी के इतने बड़े भक्त रहे, B.R. नंदा की किताब आई गांधी एंड हिज क्रिटिक्स। गांधी, इन चीजों को पढ़िए आप गांधी को समझने के लिए। गांधी एंड हिज क्रिटिक्स, बहुत पहले वेद मेहता ने लिखा। वेद मेहता was a blind scholar based in USA, and he wrote a book, Epistles of Mahatma Gandhi. Epistles of Mahatma Gandhi। या कुछ वर्षों पहले सुधीर कक्कर की एक किताब आई, लव अफेयर्स ऑफ गांधी, मीराबेन के साथ जो उनका रिलेशनशिप था। तो रामचंद्र गुहा, सुधीर कक्कर, वेद मेहता सभी लिखते हैं, खास करके स्त्रियों के साथ। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि गांधी कोई भगवान नहीं थे, इसको दिमाग में रख लिया जाए। वी शुड नॉट डेइफाई गांधी। गांधी वॉज ए सुपर ह्यूमन बीइंग, दैट्स ऑल, दैट्स इट। लेकिन गांधी देवता नहीं थे। गांधी में भी मानव सुलभ गुण थे और गांधी ने उसको कभी भी सप्रेस नहीं किया। गांधी वॉज वेरी ऑनेस्ट दैट वे। हम ये क्यों कहते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज द आई से द बिगेस्ट और द बेस्ट autobiographical writing in world, because Gandhi confessed everything. Gandhi believed, ये क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट सुनीता जी कह रही थी कि उनके ऊपर में ये भी आरोप लग रहा था कहीं न कहीं क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट उनके ऊपर था। तो गांधी बिलीव्ड इन कन्फेशन, और गांधी जो करते थे वो एक खुली किताब की तरह से करते थे। गांधी डिड नॉट हाइड एनीथिंग। अब उनके बारे में दो तीन बातें, सुधीर कक्कर से लेकर शंकर सरन से लेकर मधु किश्वर से लेकर जो पहले लिखती हैं मधु किश्वर कि गांधी ने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परिवार के पिता के संपत्ति में महिलाओं के अधिकार की बात की, उसके लिए संघर्ष किया और उनका अधिकार दिलाया। गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को घर से बाहर निकलकर राजनीति में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। गांधी बिलीव्ड इन इक्वलिटी। Gandhi's personality personifies magnitude of humanity, integrity, equality, and what not. Gandhi ji was what not. तो ये रामचंद्र गुहा और इनके सरीखे लोग कहते हैं गांधी was not flawless, और वो महिला की चर्चा करते हैं। दो तीन बातों की चर्चा होती है, संक्षेप में मैं कहूँ आपको, क्योंकि महिलाओं के साथ गांधी के संबंध विचित्र थे। एक तो ये कहा जाता है भाषण देते थे गांधी और अपनी पत्नी की पिटाई कर दी साउथ अफ्रीका में, ये भी है, डॉक्यूमेंटेड है। फिर गांधी का अपने भतीजे की पत्नी के साथ, मनुबेन के साथ क्या संबंध था। नोआखाली का जब सांप्रदायिक दंगा फैला हुआ था, हजारों हजार लोग कुर्बान हो रहे थे, मर रहे थे, खून खराबा हो रहा था, और गांधी रात में मनुबेन के साथ नग्न सोते थे। गांधी का एक्सपेरिमेंट था। 77 साल के एज में गांधी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या उसके पहले गांधी दूसरी शादी करना चाहते थे। मित्रों, आप जानते होइएगा कि नहीं, ये मैं रामचंद्र गुहा की पुस्तक से बहुत अच्छी तरह जान पाया। गांधी दोबारा शादी करना चाहते थे। जब गांधी ने सेलिब्रेसी का ओथ ले लिया था, गांधी के 5 बच्चे हो चुके थे, और उसके बाद गांधी फैसिनेटेड थे, इन्फैचुएटेड थे एक महिला से, और गांधी ने खुद लिखा, गांधी ने खुद लिखा कि एक रात मैं लाहौर में बच गया। गांधी लाहौर गए थे अपने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। वहीं एक महिला से मुलाकात हुई उनकी, जिनका नाम सरला देवी चौधरानी था।
सरला देवी प्राय मुझको लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी, बड़ी लेखिका थी, बड़ी पेंटर थी, बड़े आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामिनी थी, और गांधी को उन्होंने अपने मोहपाश में बांध लिया, माया मोह में गांधी को बांध लिया। और लिखा गांधी ने कि मैं उनके निमंत्रण पर उनके ही यहाँ रात में ठहरा। उस रात उनके पति कहीं किसी कार्य से बाहर गए थे और मैं इतना इंटीमेट हो गया उनसे कि भगवान ने मुझे बचा लिया। गांधी हर चीज में भगवान के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि गांधी की मोरालिटी की बात हो रही है कि गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट मोरल फोर्स। और आज की राजनीति में सिर्फ मोरल फोर्स का अभाव हो गया है। तो देखिए आज हम किस हद तक उतर जाते हैं, हर परिवार में घुस जाते हैं, उसका हम डायग्नोसिस करने लगते हैं, जो भी करते हैं। राजनीति में कोई मूल्य, कोई मान, कोई मर्यादा नहीं रह गई है आज देश में। ऐसी स्थिति में हम गांधी को याद करते हैं। वी आर वेटिंग फॉर गांधी, यू कम एंड यू रिडीम अस। हमें आप इस राजनीतिक जटिलता से उबारिए गांधी। और जिस तरह से आपने लोकतंत्र की कल्पना की थी, आपने राम राज्य की कल्पना की थी, गांधी राम के वक्त थे। और ये भी कहा गया कि अंतिम सांस छूटते समय भी गांधी ने अपने मुंह से राम शब्द का ही प्रयोग किया, हे राम का करके वो चले गए। मेरे किसी मित्र ने मुझे चिढ़ाने के लिए बार बार कहा जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैंने उसका जवाब दिया ये कह करके, हे राम, हे राम। उसके बाद वो शांत हो गया। राम की पूजा आप कीजिए ना, कौन मना करता है आप। लेकिन गांधी के भी राम थे, लेकिन गांधी के राम दशरथ नंदन श्री राम नहीं थे। गांधी के राम अयोध्या में पैदा होने वाले श्री राम नहीं थे। गांधी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व स्वार्थों का परित्याग करके अपने प्रजा के लिए किस तरह के शासन तंत्र की स्थापना की थी। हर एक आदमी का सम्मान करना गांधी ने सिखाया था। तो गांधी की आज बहुत ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है, हम इसे महसूस करते हैं। मैं रामचंद्र गुहा का हवाला दे रहा था, महिलाओं के साथ उनके संबंध का हवाला दे रहा था। और गांधी इस कदर फिदा हो गए, गांधी ने लव लेटर्स लिखना शुरू कर दिया, सरला देवी ने उत्तर में जवाब देना शुरू कर दिया, और ऊपर में माय लॉ गिवर करके गांधी या सरला एक दूसरे को संबोधित करते थे। गांधी एक रात बेचैन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो उनके समधी हुए, वे उनसे मिलने के लिए आए। तो गांधी ने अपने मन की बात कही। राजगोपालाचारी ने कहा, खबरदार, आप सोच लीजिए कि आपके सामने एक महिला है और आपके सामने आपका देश है, क्योंकि आप यदि इस तरह की हरकत करेंगे तो इसका बुरा असर पड़ेगा देश में। आपकी जो छवि बनी है वो धूमिल हो जाएगी, और असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम आपने सोचा है या चल रहा है जिस तरह से, उसमें बाधा पहुंचेगी। सरदार पटेल ने कहा, इट इज ए स्कैम। ऐसा होता है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो गांधी ने कहा राजगोपालाचारी से, हम इतना तो घोषित कर सकते हैं कि सरला देवी इज माय स्पिरिचुअल वाइफ। वो कहते रहे गांधी पत्र में लिखते रहे। लेकिन जब राजगोपालाचारी और सरदार पटेल जैसे लोगों ने उन्हें आगाह किया कि उनके व्यक्तिगत प्रेम का असर राष्ट्रीय आंदोलन पर कैसा पड़ेगा, गांधी ने एकाएक त्याग दिया उस भावना को। देखिए गांधी का संकल्प क्या था, गांधी की अपनी सोच क्या थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा स्वार्थ कुछ नहीं होता है, मेरा पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखता है, देश मेरे आगे है, मेरे देश मेरे सामने है। और गांधी ने उनको करीब करीब धीरे धीरे वो बेचैन होकर के सरला देवी आ गई मिलने के लिए गांधी से। गांधी ने कोई खास नोटिस नहीं लिया उनका। तो सुधीर कक्कड़ जैसे जो साइको एनालिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि सरला देवी के हृदय पर क्या गुजरी होगी, कोई इसका अंदाजा लगा सकता है। मनु बेन और जो दूसरी महिलाएं थी जिनके साथ गांधी
सोते थे नग्न अवस्था में, खुद नग्न होते थे, महिलाओं को भी नग्न करते थे। तो उस जो मनोदशा, गांधी तो बहुत पहुंचे हुए फकीर थे, हालांकि फकीर पर भी बहुत सारा उपहास है उनका, कि उनकी फकीरी भी बहुत कॉस्टली अफेयर था। मधुकिश्वर कहती हैं कि गांधी किसी विशेष खास किस्म के महिलाओं से ही मालिश करवाना चाहते थे, और गांधी जो फकीर बाबा थे वो जहां कहीं जाते थे वो महिलाएं पहले चली जाती थी, वो बकरियां पहले चली जाती थी। यानी गांधी को नौटंकीबाज कहते हैं ये लोग, और कहते हैं गांधी का जो फकीरी है, खास करके सुनीता जी ने जॉर्ज ऑरवेल की चर्चा की, रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी उनकी किताब है, उसमें स्पष्ट वो लिखते हैं कि गांधी तो हमेशा ब्रिटिश राजभक्त थे। अंग्रेज जानते थे कि गांधी हमारे हित की बात करेगा, हमें कोई डैमेज नहीं होने देगा, हमेशा बचाएगा गांधी हमें। और गांधी तो बहुत साधारण व्यक्ति थे। जॉर्ज ऑरवेल बहुत हाईली गांधी को नहीं रिगार्ड करता है अपने स्टीम में, अपने पेडेस्टल पर। तो महिलाओं के साथ, और ये साइको एनालिटिक जो एक आप कह सकते हैं एनालिसिस है गांधी का। जब गांधी नहाते थे, एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी, आप जानते हैं, भाई बहन आप सभी जानते हैं उनका नाम, डॉक्टर सुशीला नायर, और उनके भाई थे प्यारेलाल। प्यारेलाल की पुस्तक है द लास्ट फेज, गांधी के ऊपर में 2 वॉल्यूम में, और मुझे सौभाग्य है पटना कॉलेज में जब प्यारेलाल आए थे तो मैं मिला था उनसे। और प्यारेलाल मनु गांधी से शादी करना चाहते थे। He wanted to establish a romantic relationship with her, but for Gandhi, he could not succeed. तो इन महिलाओं के साथ मैं डॉक्टर सुशीला नायर की चर्चा करता था, डॉक्टर थी, गांधी की डॉक्टर थी, उनको भी नग्न होना पड़ता था गांधी के साथ नहाने के लिए। ये कैसा एक्सपेरिमेंट है साहब? एक तरफ तो सुनीता जी ने प्रशंसा के पुल बांध दिए गांधी के लिए, उनको दुनिया का इतने बड़े स्तर का फिलोसफर घोषित कर दिया, लेकिन गांधी की यह भी सच्चाई है, और गांधी इससे कभी मुंह मोड़ के नहीं चलते हैं। गांधी को जब इजैकुलेशन होता है, सोते हैं गांधी, स्खलन होता है गांधी का, तो गांधी उसके बारे में भी हरिजन में लिखते हैं कि मेरी जो तपस्या है, मेरा जो अपने ऊपर में नियंत्रण है, लगता है अभी भी वो पूरा नहीं हो पाया। कितने आदमी हैं जो इस तरह से लिखते हैं। मनु के साथ जो उनका संबंध था नग्न सोने का, उसके ऊपर में गांधी ने लंबा डिस्पैच लिखा और उसको छपने के लिए हरिजन भेज दिया, लेकिन हरिजन वालों ने उसको नहीं छापा। गांधी का ही पत्र था, गांधी ही उसके कर्ता धर्ता थे, लेकिन उनको डर था इस बात का कि कहीं ये छप जाएगा तो भूचाल आ जाएगा। लेकिन गांधी तो अपने तरफ से ईमानदार थे। तो गांधी और महिला ये अलग चीज है। गांधी के साथ, गांधी में भी फीलिंग्स थे, मीराबेन के साथ भी उनके, क्योंकि कहा जाता है कि कस्तूरबा को ये अच्छा नहीं लगता था। कस्तूरबा नोटिस करती थी उन दोनों के बीच के हाव भाव को। तो गांधी महिलाओं के प्रति किस तरह खड़ा उतरते हैं, मैं आप पर छोड़ता हूं। गांधी को हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत प्रिय था, और इसीलिए गांधी अपने हर प्रार्थना में अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह को पहले रखते थे, ईश्वर को बाद में लाते थे। इसके आधार पर भी गांधी का आलोचना के बड़े केंद्र बने कि अल्लाह को कहां घुसा देते हैं साहब। ये तो नरसिंह मेहता का भजन था, गांधी ने इंटरपोलेट कर दिया। और गांधी बहुत बड़े दुश्मन है हिंदुओं के। सबसे इंटरेस्टिंग चीज था कि हिंदुओं के लिए गांधी विधर्मी थे और मुसलमानों के लिए गांधी सनातनी थे। तो गांधी थे कहां आखिर? गांधी कहीं नहीं थे, और गांधी हर जगह थे। लाइक विवेकानंद, विवेकानंद के बारे में भी क्यों नहीं बहुत ज्यादा आजकल चर्चा हो रही है। रामकृष्ण परमहंस को क्यों नहीं आइडलाइज किया जा रहा है? रामकृष्ण परमहंस ने सर्वधर्म संभाव की बात कही। विवेकानंद ने स्पष्ट कहा कि हिंदुस्तान की लड़ाई और हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर
भारत की आजादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जंग नहीं करेंगे। विवेकानंद ने कहा खाली पेट के लिए अनाज ही उसका ईश्वर है। फॉर हंग्री स्टमक फूड इज गॉड। और इसको गांधी ने पकड़ लिया। गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान सभी तो इसी धरती पर पैदा हुए हैं। कितने लोग बाहर से आए हैं भाई। आज भी मैं पूछता हूं मित्रों आपसे, आप जो मुसलमानों के प्रति ये हेट्रेड शो करते हैं, मेरा तो ख्याल है कि 90% मुस्लिम्स जो है वो कन्वर्ट है। अब क्यों कन्वर्ट है ये पूछूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। आप दलितों को देखते हैं, अरे गांधी को तो थैंक्स कहिए आप। दलित अपने साहित्य में कहते हैं गांधी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अरे गांधी ने तो किसी के साथ अच्छा नहीं किया। और गांधी ने कहा कि आई डैम केयर। जब पूना पैक्ट हो रहा था, आप जानते हैं गांधी जी आमरण अनशन पर थे, तो सभी ने कन्विंस करने की चेष्टा की बी आर अम्बेडकर को कि आप जाइए, आप नहीं जाइएगा तो गांधी मर जाएंगे, और गांधी मर जाएंगे तो देश में कैसा भूचाल आ जाएगा। आप इस बात को समझते हैं। खास करके हरिजनों के ऊपर या दलितों के ऊपर या शेड्यूल कास्ट के ऊपर, जो भी है, जिस नाम से आप उनको विभूषित कीजिए, उनकी तो स्थिति बदतर हो जाएगी हिंदुस्तान में। और अनमने से अंबेडकर जाते हैं, गांधी से मिलते हैं, और अंबेडकर क्या कहते हैं, महात्मा जी यू हैव डन ग्रेट डिससर्विस टू अस। ही ऑल्सो कॉल्स हिम महात्मा। महात्मा जी आपने तो हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया है। गांधी का टर्स रिप्लाई था, आप जानते हैं, मेनी पीपल थिंक अबाउट मी लाइक सो एज यू आर थिंकिंग अबाउट मी, बट आई डोंट केयर। आप हमें साथ दें ठीक है, नहीं साथ दें मैं चलूंगा। और आप जानते हैं कि जो पूना पैक्ट हुआ, जिसके आधार पर रैमजे मैकडोनाल्ड का जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था उसको नलीफाई किया गया, तो अंबेडकर ने पूछा कि हम यदि इसको नहीं मानते हैं तो हमें क्या मिलेगा। गांधी ने कहा आई डोंट नो व्हाट विल यू गेट। पहले आप घोषित करें कि आप अवार्ड को नहीं मानते हैं, देखें फिर क्या होता है। और आप जानते हैं कि दलितों को उनके लिए जो सीट्स रिजर्व किए गए थे उससे कहीं ज्यादा सीट जो व्यवस्था की गई भारत की व्यवस्था में, वो दलितों के लिए ज्यादा सीट रिजर्व हुए। तो गांधी को बहुत परवाह नहीं होती थी। गांधी में कहे ना, कुछ लोगों ने कहा गांधी वाज ए क्रैंक, ही हैड डिक्टेटोरियल ट्रेट्स इन हिज पर्सनालिटी। कभी कभी गांधी किसी की नहीं मानते थे, किसी की नहीं सुनते थे। यदि सबकी सुनने लगेगा कभी कभी तो आप किसी का नहीं कर सकते हैं कुछ। तो गांधी हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हिंदू मुस्लिम समस्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, द ओनली थिंग व्हिच अगेंस्ट आई लाइक टू फाइट थ्रू आउट माई लाइफ एंड दैट इज कम्युनलिज्म। आज जवाहरलाल नेहरू सभी के आंख के क्या बने हुए हैं पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एफर्ट्स आर बीइंग टू डिसिमेट जवाहरलाल नेहरू लाइक एनीथिंग। एंड फ्रेंड्स, efforts are being made to decimate Gandhi also. एक को खड़ा करके दूसरे को नीचा गिरा देना। अरे मैं तो कहता हूं they were galaxy of stars। न नेहरू कम थे किसी से, न सुभाष कम थे किसी से, न पटेल कम थे किसी से, न गांधी कम थे किसी से, न जिन्ना कम थे किसी से। कोई कम था क्या? किसी को ज्यादा किसी को कमतर आंकना, और वो भी आप अपने कुटिल कुत्सित मानसिकता से, ये तो इतिहास के प्रति न्याय नहीं है। इसलिए गांधी को रिविजिट करने की जरूरत है। व्हाई डिड गांधी स्टैंड फॉर द कम्युनल एमिटी? बचपन में हम लोग थे, मुहर्रम में तजिया आता था, हम लोग घर से बाहर जाकर के दौड़ करके उसमें शामिल होते थे। कहां कोई हमें हलाल कर देता था? हमारे गांव में आप जाइएगा, एक हमारे अमीन आए,
तो मेरे भैया ने कहा कि अमीन साहब को बुला करके ले आओ। मैं दरवाजे पर गया, लौट के चला आया, मैंने कहा कि कोई अमीन साहब नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, तुम जानते हो। वो आए मेरे साथ और बोले ये अमीन साहब नहीं है। देखा कि धोती कुर्ता बंडी पहने हुए, तो मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि वो अमीन साहब मुसलमान है। तो कहने का अर्थ है गंगा जमनी तहजीब जो हमारी संस्कृति में, समाज में रच गई है, बस गई है, खप गई है, हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं। एक बड़े व्यक्ति ने कहा कि मुसलमानों का भी डीएनए, हिंदुओं का भी डीएनए एक जैसा है, इसलिए हम कल्चरल रेजिमेंटेशन कर सकते हैं। मेरा इशारा किधर है मित्रों, आप समझ सकते हैं। वन इंडिया, वन इलेक्शन, वन नेशन कैसे हो सकता है? मैं तो मानता ही नहीं हूं कि इंडिया अभी भी नेशन बन पाया है। इंडिया इज स्टिल ए नेशन इन मेकिंग, इन द ऑफरिंग, एज जवाहरलाल नेहरू से। इतनी संस्कृतियां, भले राम जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूजे जाते हो, शिव जी हर जगह पूजे जाते हैं, गणेश जी तो उत्तर से ज्यादा दक्षिण और पश्चिम में पूजे जाते हैं। हम एक हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास को कैसे भुलाना होगा। हमारे यहाँ मुसलमान आए तो क्या केवल भाला, बांस, गरासा और तलवार लेकर के ही दिन रात खड़े रहे? क्या हमारे यहाँ सोशलिज्म नहीं आया क्या? हमारे यहाँ के भक्ति आंदोलन को उसने प्रभावित नहीं किया क्या? और भक्ति आंदोलन, आप कबीर को, आप रसखान को, आप रहीम को, तुलसीदास के तो सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन थे मित्रों? रहीम थे। और आज हमारा बेस्ट फ्रेंड इम्तियाज है, तो आपको क्यों कष्ट होता है कि हम और इम्तियाज दो हो जाए? मैं नहीं समझ पाता। हाँ इम्तियाज, हाँ इम्तियाज फिर बात करते हैं। तो मेरा कहना है मित्रों, हम एक हैं, हमारी सोच एक है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की सोच अरब वर्ल्ड के मुसलमानों की है क्या? क्या वो कभी सोचते हैं क्या यहाँ से लूटपाट करके भाग जाएंगे क्या? यहाँ में पैदा हुए हैं, यहाँ रचे हैं, यहाँ बसे हैं। और पार्टीशन को तो कहा जाता है धर्म के आधार पर हुआ। अरे बिहार में केवल 40 लाख पॉपुलेशन मुस्लिम्स का था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। आई रिमेम्बर माय ओल्ड डिपार्टेड फ्रेंड पापिया घोष, जिन्होंने बिहारी मुहाजिर पर काम किया, पार्टीशन बिहारी पर काम किया, पार्टीशन मुस्लिम्स इन बिहार। तो कहा 95% मुस्लिम्स तो बिहार में रह गए। राही मासूम रजा की याद आती है, आधा गांव पढ़िए उनका। ये सब पढ़ने की जरूरत है। आप केवल गुरुदत्त को मत पढ़िए। जो लोग फसादी होते हैं, साहित्य में भी हर तरह के लोग होते हैं। एक तरफ प्रेमचंद कर्मभूमि लिखते हैं, तो दूसरे तरफ और भी कुछ लिखने वाले होते हैं। तो ये आपस में मतभेद पैदा करना और इस मतभेद के आधार पर अपना उल्लू सीधा करना, और उल्लू एक ही है, वो है वोट बैंक, वो है पावर में बने रहना। और पावर में बने रहने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, भले हमें गांधी की कुर्बानी देनी पड़े, नेहरू की कुर्बानी, और सरदार पटेल और सुभाष जी तो खैर ऊंचे ऊंचे पेडेस्टल पर खड़े हो रहे हैं, हमें उनसे कोई कष्ट नहीं है, हमारे हीरो है, हमारे हीरोज हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि जो वेन्यू गांधी जी के लिए ईयरमार्क हुआ था, वहां सुभाष जी कैसे आ गए? और भी बड़ी जगह हो सकती है सुभाष बोस को आने के लिए, उनको बुलाया नहीं जा सकता है। और तभी याद आता है जय हिंद के साथ लोग जोड़ देता है। मैंने एक लेक्चर में कहा था 2 अक्टूबर को कि क्विट इंडिया का स्लोगन गांधी ने नहीं दिया था, ये स्लोगन यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और जब मैंने कहा कि जय हिंद का नारा आबिद हुसैन सफरानी ने दिया था, लोग बाबा कह रहे आप क्या बात करते हो भाई? मैं तो मानता हूँ 1857 का विद्रोह जितना हिंदुओं का विद्रोह है, उससे ज्यादा बड़ा तो मुसलमानों का विद्रोह। यदि आप उसे सावरकर साहब कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें तो आप देखिए कि कुर्बानी देने में कौन आगे बढ़ रहा है। खैर अलग मुद्दा है मित्रों, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है। तो गांधी, हिंदू और मुस्लिम पर गांधी को फिर से आने की जरूरत है। वी आर वेटिंग गांधी, मिस्टर गांधी, वी आर सिंपली वेटिंग फॉर यू। स्त्री की बातों को लेकर गांधी पर जाने की जरूरत है, गांधी को रिवैल्यूएट करने की जरूरत है, गांधी को रिविजिट करने की जरूरत है। दलित पर आता हूं मित्रों, इसके साथ मैं बात खत्म करूंगा। दलित, क्योंकि बार बार बी आर अम्बेडकर साहब ने यही कहा, बी आर अम्बेडकर
अपना सबसे बड़ा दुश्मन जिन्ना को नहीं मानते थे। B.R. अम्बेडकर को सबसे ज्यादा खतरा किसी व्यक्ति से लग रहा था तो वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। मैं मानकर चलता हूं, इस पर विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि बोथ गांधी एंड अम्बेडकर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, supplementary to each other. Ambedkar was born Dalit, and Gandhi said that he was adapted Dalit. In his words in the words of Gandhi, Gandhi said to Ambedkar, Mr. Ambedkar, you are born Dalit, so you are Dalit, and I am adapted Dalit, and my pain is more than yours. अब इस पर विचार करने की जरूरत है कि कोई पैदाइशी हो जाएगा, दर्द उसी को केवल होगा। क्योंकि गांधी ने कहा था ये दलित समस्या हिंदू सभ्यता के मुंह पर, चेहरे पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग है, सबसे बड़ा कलंक है, और इसके लिए हिंदुओं को प्रायश्चित करना होगा। और गांधी के जान पर बनाया था, आप जानते हैं, चाहे हमारे ही बिहार, अब तो झारखंड है, देवघर में पंडाओं ने उनके ग्लास के पेंस तोड़ दिए थे, बक्सर में उनके ऊपर जान पर हमला हुआ था। ये हमला मुसलमानों ने नहीं किया था मित्रों, गांधी का जान मुसलमान ने नहीं लिया मित्रों। तो हिंदुस्तान को आज सबसे ज्यादा खतरा किससे है? जो आप डराते हैं हिंदुओं को ये कह करके कि समझ जाओ मुसलमान तुम्हारा कत्लेआम कर देंगे और तुम्हारे बहु बेटियों का इज्जत फिर से लूट लेंगे। गांधी के बारे में कहा जाता है, गांधी महिलाओं को कहते थे कि जब तुम्हारा बलात्कार अवश्यंभावी हो, एक काम करो, तुम अपने दांत को अपने जीवा पर ले जाओ और जितना जोर से उसको कुचल सको, क्योंकि वो दर्द रेप के दर्द से कम होगा। और इसीलिए मधुकिशोर कहती हैं कि आदमी नपुंसक है, गांधी को नपुंसक यूनक कहती हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं मिलूंगा फिजिकली कभी तो बात करूंगा उनसे। हाँ, गांधी यूनक थे, गांधी नपुंसक थे, और आंख के सामने इन बर्बादियों को देख रहे थे। अरे बलात्कार तो मुसलमानों का भी हो रहा था ना, उनकी औरतों का भी तो हो रहा था, लाशें तो दोनों ओर गिर रही थी। आप रामानंद सागर का उपन्यास पढ़िए, और इंसान मर गया। मित्रों, कितनी चर्चा करूं, दलित कार्यक्रम कांग्रेस का हिस्सा बना तो गांधी के चलते बना। आज हिंदू समाज में 16% जो दलितों की संख्या है, हिंदुओं को तो थैंकफुल होना चाहिए गांधी को, क्योंकि जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी मित्रों, सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो एक और पाकिस्तान बनता। आज मैं बार बार अपने मित्रों से कहता हूं, मैं इम्तियाज जी से भी कहता हूं कि एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश चल रही है, क्योंकि मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि इस देश के बंटवारे के लिए जितना मुस्लिम लीग उत्तरदायी था, जितना जिन्ना उत्तरदायी थे, उतना ही उत्तरदायी हिंदू महासभा थी, उतना ही उत्तरदायी राष्ट्रीय स्वयंसेवक थी, उतना ही उत्तरदायी कांग्रेस थी, उतना ही उत्तरदायी सरदार पटेल थे, नेहरू थे, सभी थे, गांधी थे भी आप कह सकते हैं। तो पार्टीशन, विभाजन किसी एक का हैंडीवर्क नहीं था मित्रों। आप किसी को दीवार में सटाते जाओगे तो जिन्ना रिटेलिएट करेगा, तो कोई भी करता है मित्र अपने सर्वाइवल के लिए। आप भी करते हो, आज भी करते हो। तो हिंदुओं को डराना बंद करो। हिंदू आज महफूज हैं जैसा कि वो पहले से थे, और एक बगान में यदि तरह तरह के फूल नहीं खिलेंगे, माओ त्से-तुंग ने कहा था, लेट 100 flowers bloom, 100 varieties of flowers bloom rather it should be, तो इतने तरह के फूलों को आने दो। और मैं कह रहा था कि दलितों के प्रति या हिंदुओं को शुक्रगुजार होना चाहिए मोहनदास करमचंद गांधी के प्रति कि 16% उस जनसंख्या को हिंदू फोल्ड में, हिंदू सामाजिक ढांचे में रखने में यदि सफलता किसी व्यक्ति ने दिलाई, उसका सबसे बड़ा श्रेय मोहनदास करमचंद गांधी को। गांधी उनके लिए मंदिर आंदोलन करते थे, मंदिर जाते थे। अंबेडकर भी शुरू में गांधी को इमिटेट करने की चेष्टा करते थे। आपको याद होगा 14 टैंक एजिटेशन, अंबेडकर भी मंदिर में प्रवेश करने की बात करते हैं, लेकिन बाद में लगता है
ये तुम्हें गांधीवादी हो जाऊंगा, तो गांधीवाद से इतना परहेज अम्बेडकर को है, टच मी नॉट। तो बाद में चल के अपना कार्यक्रम देने लगे। और जानते हैं मित्रों, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने की बात हुई तो अम्बेडकर साहब तो हार गए थे, आप जानते हैं। उन्हें दूसरी जगह से जिताया गया, और जीतने के बाद जब सवाल आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, तो गांधी ने वीटो कर दिया। गांधी वीटो करते थे, जैसे गांधी ने वीटो कर दिया कि गांधी का उत्तराधिकारी नेहरू होगा। हमारे एक पुराने गांधीवादी मित्र हैं, अब मधु किशोर की तरह से थोड़ा थोड़ा चोला उनका भी बदलता जा रहा है। पता नहीं किसका असर है गांधी पर। कम से कम 10 किताबें हैं उनकी, प्रोफेसर श्री भगवान सिंह जी यदि सुन रहे होंगे तो गांधी ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि जब मोतीलाल नेहरू मरने लगे तो उन्होंने जवाहर का हाथ गांधी के हाथ में दे दिया। और वो कहते हैं कि भारत में राजनीति में वंशवाद की शुरुआत गांधी ने की, कि चूंकि उनका हाथ, नेहरू का हाथ गांधी के हाथ में चला आया, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल के सारे क्लेम्स को नजरअंदाज कर दिया। ये आप पर मैं छोड़ता हूं, बहुत लंबा चौड़ा विषय है कि सरदार पटेल के प्रति क्या न्याय हुआ, अन्याय हुआ। और मैं महसूस करता हूं मित्रों, ये सारी भ्रांतियां गांधी के बारे में, गांधी के दर्शन के बारे में तभी पैदा हो रही हैं जब हम गांधी को पढ़ते नहीं हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को हम पढ़ते नहीं हैं। और यदि आपका कोई हिडन एजेंडा हो यदि, तब तो फिर बात ही कुछ और होती है। और हिडन एजेंडा आज आप देख रहे हैं जाकर के देश में। खैर जो भी है मित्रों, देश चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। गांधी गए हैं, लेकिन मैंने कहा कि गांधी को जितना दफनाने की कोशिश करोगे मित्रों, जितना कब्र में डालने की कोशिश करोगे मित्रों गांधी को, गांधी उस कब्र से उठकर उतने ही जोर से बोलेगा। क्योंकि गांधी एक शख्स का नाम है, एक शख्सियत का नाम है, जिसने सत्य पर आचरण किया, अहिंसा की बात की, एक नया नायाब तरीका दिया राष्ट्रीय आंदोलन को, जिस पर काफी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि उसी के आधार पर देश आजाद हो गया। मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिलिया और भी जितने लोग थे, उनकी कुर्बानी को मैं दरकिनार नहीं करना चाहता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दरकिनार नहीं करना चाहता, लेकिन सबों ने मिलकर देश के लिए रास्ता तैयार किया। और उस रास्ते को तैयार करने में मेरी समझ से, छोटी समझ से, गांधी की सबसे बड़ी महती भूमिका थी। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना देर सुना। फिर कभी बात होगी तो हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत धन्यवाद अविनाश जी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने संबोधित किया और गांधी के बारे में जो विस्तार से आपने चर्चा की, उन पक्षों की जिसे आज रखने की जरूरत है। आपने गांधी को ये जरूर कहा कि वो रिडीमर हैं, बट फ्लॉलेस नहीं है। और यहीं से उस बात की कड़ी शुरू हुई कि गांधी में हमें इन दोनों पक्षों को लेकर चलना है। और चाय की चर्चा आपकी रही और बहुत अच्छी रही जी। और ये कहना चाहेंगे कि गांधी के जो डिट्रैक्टर्स जिन्हें आप कह रहे हैं, वो एक तरह से उन्हें रिविजिट कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं कि वो गांधी को किस रूप में देखते हैं। और इस रूप में भी देखा जाना, इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर ये डिटेक्टर्स हैं हमारे लिए, तो जो मधु किश्वर जी ने लिखा, सुजाता पटेल जी ने उसका प्रति उत्तर दिया है, और महिला लेखन में वो भी हैं और इसका प्रति उत्तर वो देती हैं। और गांधी के विषय में वो कहती हैं कि गांधी का क्रिटिसिज्म मधु किश्वर से आना चाहिए था। जब एक एडिटेड किताब रघुराम राजू की आई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, तो उसमें सुजाता पटेल जी ने इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया था। उसी तरह से जिस प्रकार से हमने गांधी को इंट्रोड्यूस किया और एक ट्रिब्यूट के रूप में शुरू किया, तो एक रमीन जहान बेगलू जो आज अशोका यूनिवर्सिटी में गांधी एंड पीस स्टडीज के चेयरपर्सन हैं, और गांधी के विषय में और उनके थॉट्स को लेकर जो वो लिखते हैं, अपने विचार और उद्गार प्रकट करते हैं, तो वो गांधी को एक दूसरे लेवल पर ले जाते हैं, मोरालिटी के साथ रखते हुए। तो एक वो दृष्टिकोण होता है।
एक सुधीर चंद्र जी का दृष्टिकोण है, जहां वो ये गांधी के समर्थन में ही कहते हैं, उनसे विलग होते हुए भी कहते हैं कि जो फैलेसी ऑफ स्पीड की बात गांधी करते हैं कि विलेज लाइफ और मॉडर्निटी के बीच जो वो डिस्टिंक्शन है, तो उसकी बात भी वो उठाते हैं। और अगर त्रिदीप सुहरूद की बात करें, क्योंकि वो भी मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेटर हैं गांधी के, और जो नए कामों में रिविजिट करने की बात हो रही है, रामचंद्र गुहा हो, अनन्या वाजपेयी हो, और जो उनकी राइटिंग और उन पर लिखी गई राइटिंग्स को वो समझकर जो समीक्षात्मक दृष्टिकोण लेकर जो बात उठा रहे हैं, वो बहुत महत्व रखता है। सुजाता पटेल जी ने भी इसी एफेमिनेट कैरेक्टरिस्टिक को उठाते हुए ये बातें रखी हैं, जो आपके द्वारा भी अभी रखी गई, कि इन्हें एफेमिनेट माना गया, जो कि हर चीज में महिलाओं को आगे रखा। हालांकि वो उन्हें एक एथिकल सोल फोर्स के रूप में भी देख रहे हैं, पर व्यक्तिगत जीवन में उनका कुछ अलग आकलन किया जा सकता है, और उस आकलन से हमें उन्हें अलग भी नहीं रखना है। और दूसरी बात ये भी कही जाएगी कि फिलॉसफी की बात तो अलग है गांधी को लेकर, बट वी ऑल्सो हैव टू लुक एट गांधी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, कि वो स्ट्रैटेजिस्ट है, तो जो पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में जिसकी आवश्यकता है, उस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो उनके संबंध और उनका डिसीजन, उनका निर्णय सुभाष चंद्र बोस को लेकर हो, पटेल को लेकर हो, या विभाजन को लेकर हो, वो एक अलग रूप में हमारे सामने आता है। बहुत व्याख्या, पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है, पर कहीं ना कहीं इन सब के बावजूद गांधी में हम जरूर पाते हैं कि एक मोरालिटी का स्टांस, एक ईमानदारी की प्रवृत्ति इतनी कि आप अपने को, स्वयं को सबके समक्ष रख दें, वो ऑटोबायोग्राफी में हमें नजर नहीं आती है। और उस ईमानदारी को देखते हुए जो उन्होंने राजनीति में उतारने की कोशिश की, व्यक्तिगत जीवन में उतारने की कोशिश की, उस पर जो लेखनियां आ रही हैं, उस पर जिसमें आपने रोशनी डाला, हम बहुत आभारी हैं कि आपने उन पक्षों को उठाया जिन पक्षों को आज उन मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है। तो ये जो आज के मुद्दे हैं, गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपने सामने रखा। हम बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं, एंड द प्रोफाउंडिटी विद व्हिच यू हैव expressed your views, we are very grateful to you, sir. So thank you for being with us here. I now request our respected sectional president, a distinguished guest of the seminar, who's working relentlessly, as I've mentioned earlier, in the field of academics, and we would now like to have his perspective on Gandhi. तो सर, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने विचारों को रखें। क्योंकि हम लोगों ने एक वैलिडिक्टरी सेशन 3 बजे से रखा है, तो हमें समय की सीमा में अब स्वयं को थोड़ा बांधना पड़ेगा, और हम आपके विचारों को जरूर सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके विचार हमेशा हम लोगों ने देखे हैं कि बहुत ही वो आते हैं, और बहुत एक जो आपकी सोच है उस धारा को आप लेकर चलते हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं। जी, प्रोफेसर संजय स्वर्णकार जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम। निश्चित रूप से प्रमोदानंद जी, आदरणीय प्रमोदानंद जी ने जो वक्तव्य यहाँ दिया है, जो व्याख्यान यहाँ दिया है, उसके बाद गांधी जी पर हालांकि कई एस्पेक्ट्स हैं जिन पर बात की जाती है, लेकिन हाल फिलहाल अभी जो हमने लगभग 80-90 मिनट का लेक्चर सर का सुना, तो निश्चित रूप से गांधी जी को समझने के लिए, गांधी जी के व्यक्तित्व को जानने के लिए और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समकालीन तौर पर उनका आकलन करने के लिए बहुत जरूरी है कि विचार किया जाए। मैं सबसे पहले आज शहीद दिवस पर लोक में व्याप्त 20वीं सदी के महामानव महात्मा गांधी जी के प्रति
अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जैसे लोक ने स्वीकार किया, उसे हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय प्रमोदानंद जी ने बहुत कुछ कहा है। जिसे लोक ने स्वीकार किया, एक एक जन ने स्वीकार किया, उसे अस्वीकार करने का अधिकार भी क्या है हमें। लोक को दृष्टा कहा गया है, यानी वो अवलोकन करता है, और जब वो पूरी तरह से अवलोकन करता है और किसी को मान्यता प्रदान करता है तो वह व्यक्ति लोक पुरुष हो जाता है। लोक के बहुमुखी विस्तार को जैमिनी ग्रंथ में बहु व्याहते व अयम बहुसो लोकः और गीता में अतोस्मि लोके वेदिच प्रथित पुरुषोत्तम इस तरह से व्यक्त किया गया है। तो जब लोक इतना महत्वपूर्ण है और गांधी जी की उपस्थिति के दौरान और गांधी जी के जाने के बाद लोक ने जिस तरह से उन्हें स्वीकार किया है, तो वहां अस्वीकृति की बात, वैचारिक अस्वीकृति की तो बात हो सकती है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अस्वीकृत करने का मुझे नहीं लगता कि कोई आधार बनता है। उनमें जो क्षमताएं थी, महात्मा गांधी जी के अंदर जो क्षमताएं थी वो असीम क्षमताएं थी। वे अपनी क्षमताओं के बल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को, अपनी प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदल देते थे। और ये जो अद्भुत क्षमता थी उनके अंदर, ये क्षमता एक मैसेज के रूप में तत्कालीन लोक के सामने पहुंचती थी। और ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी कोई भगवान थे जो हर जगह प्रकट हो जाते हों। महात्मा गांधी जहां भी थे, जहां से वो आंदोलन प्रारंभ करते थे, वो आंदोलन एक जन आंदोलन हो जाता था, एक लोक आंदोलन हो जाता था। और वो जो लोक आंदोलन है, वो लोक आंदोलन किसी एक पर्टिकुलर भौगोलिक सीमा के अंदर नहीं होता था, बल्कि वो एक राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं में बनता था। यानी पूरे भारतवर्ष में वो आंदोलन होता था, उसकी गूंज सारे देश में होती थी। तो इस दृष्टि से हम अगर देखें तो महात्मा गांधी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी थे, और उन्होंने अपने व्यक्तित्व में विनम्रता की महनीयता को आत्मसात कर लिया था। इतने व्यापक स्तर पर उसको आत्मसात किया था कि लोग उनकी विनम्रता को देखकर उनके प्रति विनीत हो जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी में भगवान राम की मर्यादा, संयम और संघर्ष शक्ति थी, जैसा कि आदरणीय सर ने भी अभी बताया। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण करना चाहते थे, और रामराज की बात भी उन्होंने की। श्री कृष्ण की जो स्ट्रेटेजी, अभी मैडम आप भी बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, तो श्री कृष्ण की जो नीति विज्ञता थी, उनकी जो दृढ़ता थी, तुरंत निर्णय लेने की जो उनमें क्षमता थी, वो उन्होंने उसको फॉलो किया था। महावीर के अहिंसा के सिद्धांत और बुद्ध की करुणा को भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व के अंदर शामिल किया था। तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने, उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो पर्सनालिटी किसी एक पूर्वगामी पर्सनालिटी का निचोड़ नहीं था, बल्कि सदियों से इस धरती के ऊपर जो महामानव हुए हैं, उन महामानवों के श्रेष्ठ गुणों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा, चाहे वो ईसा हो, नानक हो, कबीर हो, नरसिंह मेहता हो, उन सभी को, इवन वो स्वामी विवेकानंद से भी प्रभावित थे। तो ये सारे जो महामानव थे, इन महामानवों के बेहतर गुणों को उन्होंने अपने अंदर उतारा था, और वे अपने इस व्यक्तित्व के कारण ही लोक पुरुष बन सके थे। वे एक सांस्कृतिक विचार के रूप में जाने जा सके। गांधी जी की सादगी, साधना और सिद्धांतों ने न केवल तत्कालीन लोक को प्रभावित किया,
बल्कि बाद की पीढ़ियों को भी अपना अनुगामी बनाया, उनको फॉलोअर बनाया। यही वजह है कि आज हम सभी इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में उनकी प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं। और आज चूंकि शहीद दिवस है, तो पूरे देश में ही जगह जगह, चाहे सरकारी तौर पर चाहे गैर सरकारी तौर पर, गांधी जी की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनके जो विचार हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, वो रिलेवेंट है, वो प्रासंगिक है, उसको हम अप्रासंगिक नहीं कह सकते हैं। चाहे अनचाहे हमें गांधी जी के विचारों को, उनके सिद्धांतों को फॉलो करना होता है। गांधी जी ने अपने जीवन में, खासतौर पर राजनीतिक जीवन काल के दौरान, लोक तक पहुंचने के लिए, लोक के करीब जाने के लिए इस तरह के उपाय किए थे। वो स्ट्रेटेजिकल भी हो सकते हैं और उनके नेचुरल प्रयास भी हो सकते हैं। जैसे उन्होंने बकरी को अपना साथी बनाया। बकरी जो कि लोग के कहीं अधिक निकट का जानवर था, गाय की तुलना में उन्होंने बकरी को तरजीह दी। उसके पीछे और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में बकरी को जो उन्होंने अपनाया था और अपने साथ उन्होंने बकरी को रखा था, एक जानवर के रूप में वो बकरी को लेकर चल रहे थे, तो एक मैसेज वो लोग को देना चाहते थे। बकरी उस जमाने में और आज के जमाने में भी विपन्नता, निर्हीता और उपेक्षित समाज के उपेक्षित व्यक्ति का प्रतीक मानी जाती है। और यह संदेश उन्होंने लोक तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की थी। तो लोक के साथ जुड़ाव पैदा करने के लिए, लोगों में स्वदेशी की भावना को प्रसारित करने के लिए वो इस तरह के काम करते थे। उन्होंने कपास को इसी वजह से अपनाया, उससे उन्होंने सूत बनाया, उसके लिए तकली और चरखे को अपना उपकरण बनाया। तो चूंकि तकली और चरखा आम आदमी की आजीविका का साधन था, वहां उन्होंने हिट किया, वहां उन्होंने उसको अपने जीवन का आधार बनाया। और जो चरखा एक उपकरण के रूप में घर घर में हुआ करता था, वह गांधी जी के जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया। और यही वजह है कि जगह जगह इस चरखे की चर्चा होने लगी। गांधी जी को चरखे के साथ जोड़ते हुए लोग के अंदर जो बात कही जाती थी, गांधी को चरख्यो चलियो और कुम्हार को चाक, अरे विदेशी भाग जा क्यों कटवावे नाक। चरखा गीत की पंक्तियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी प्रभावित किया। और लोक से निकले हुए ये जो नारे हुआ करते थे या जो गीत हुआ करते थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मुंह पर, उनके जवान पर आते थे। गांधी जी को चरखो चाल्यो चल्यो सुदर्शन धार, आट्या पाट्या छोड़ धोरिया भग जा लंदन पार। इस तरह के जो गीत हुआ करते थे, वो लोगों के अंदर मर मिटने की भावना पैदा कर देते थे। गांधी जी की आंधी चली उड़ गया अंग्रेजों का टोप, गांधी आजादी तो लेके रवांगा बिन बंदूक बिन तोप। तो ये जो गीत जगह जगह विभिन्न स्थानों पर, आपके बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, वहां के लोग के द्वारा गांधी जी, उनके चरखे और उनके अन्य सिद्धांतों को लेकर विभिन्न प्रकार के गीतों की रचना होती थी और उन जन आंदोलनों में उन गीतों को गाया जाता था। निश्चित रूप से जब लोग के बीच में इस तरह के गीतों को गाया जाता था, तो गांधी जी वहां नहीं होते थे। ऐसा मैंने पहले भी कहा कि वो भगवान नहीं थे कि हर जगह प्रकट हो जाएं। वो किसी एक निश्चित स्थान पर होते थे, निश्चित उनका स्केड्यूल होता था और उस हिसाब से वो आंदोलन का नेतृत्व करते थे। लेकिन विभिन्न स्थानों पर इन गीतों के माध्यम से लोगों की भावनाओं में वो उपस्थित होते थे। उनका जो प्रभाव था, उनका जो विश्वास था, उनकी जो आवाज थी, आभास
आंदोलन की लोक स्वीकृति के रूप में हमें मानना चाहिए। गांधी जी ने निश्चित रूप से पहले लोक को स्वीकार किया और लोगों ने गांधी जी को बाद में स्वीकार किया, उन्हें अपना लिया। गांधी जी की आवाज ही लोक की आवाज हो गई और यही वजह है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भले ही 3 बड़े जन आंदोलन खड़े किए थे और उनके बीच में काफी गैप भी हम देखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी विद्यमान थे। गांधी जी जो संदेश देते थे कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को सुराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं, आत्मा अतृप्त है? तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। अंत्योदय की बात कर रहे थे वो, और उनके ये जो विचार हैं, चाहे वो दलितों को लेकर हो, चाहे गरीब को लेकर हो, ये विचार ही उन्हें लोक के साथ जोड़ रहे थे। भारतीय संस्कृति को महात्मा गांधी जी ने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। हम इस तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि हमें, चूंकि गांधी जी ने जो मार्ग अख्तियार किया था, अहिंसा का जो मार्ग अख्तियार किया था या सत्य का जो मार्ग अख्तियार किया था, उस मार्ग पर चलते हुए पूरे देश को एक दायरे में लेके आना महात्मा गांधी के लिए एक बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अख्तियार की थी वो ये अख्तियार की थी कि वो लोक को जानना चाहते थे, लोक की नब्ज तक पहुंचना चाहते थे और ऐसा ही उन्होंने किया। और तत्कालीन परिवेश में लोगों के दिलों तक उन्होंने अपनी जगह बनाई और इसी वजह से महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता भी बने और हम उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जानते भी हैं। वो गुजरात में नरसिंह मेहता जी का मध्यकालीन जो भजन है, वैष्णव जन तो तने कहिए जे पीर पराई जाने रे, ये उनका प्रेरक गीत था और इसी को उन्होंने आत्मसात करने की कोशिश की थी। गांधी जी को भारत की लोक संस्कृति का पूर्ण एहसास था, आभास था और उस लोक संस्कृति को उन्होंने समझने का, जानने का और आत्मसात करने का व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया था और उसे अपने आचरण में भी उतारा था। एक उनकी पर्सनालिटी का, उनके व्यक्तिगत जीवन का पृथक पक्ष हो सकता है, पृथक पहलू हो सकता है और जिसके ऊपर एक डेलिब्रेशन लंबे समय से चल रहा है। आज भी आदरणीय प्रमोदानंद जी ने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। वो चल रहा है और वो चलता रहेगा क्योंकि गांधी जी को जानने वाले, गांधी जी को समझने वाले, गांधी जी को पढ़ने वाले तरह तरह के लोग हैं और जिनकी अप्रोच जिस तरह की है वो गांधी जी को उसी तरह से जानने, समझने का और आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी के व्यक्तिगत आचरण, आचार व्यवहार और जीवन शैली को लोक तक हम देखते हैं और हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी जीवन शैली और अपने आचार व्यवहार से ही लोगों तक अपनी पहुंच बनाई थी और इसी वजह से लोगों तक अपनी पहुंच के वो इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी हो गए, इतने सशक्त पर्सनालिटी हो गए कि मुसोलिनी ने जब उनसे पूछा कि वो फासिज्म के बारे में क्या पूछते हैं, क्या जानते हैं या क्या विचार रखते हैं, तो उन्होंने बेबाक जवाब दिया मुसोलिनी को कि जिस वाद की शुरुआत, जिस इज्म की शुरुआत हिंसा से हो रही है, उसका अंत भी हिंसा के साथ ही होगा। तो इतनी बेबाकी के साथ
वो जवाब तभी दे पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत अधिक कॉन्फिडेंट हो चुके थे, बहुत अधिक सशक्त हो सके थे भारतीय लोक के बल पर। वस्तुतः वो किसी वाद में विश्वास नहीं रखते थे और न ही किसी वाद को, किसी इज्म को या किसी फिलोसफी को प्रारंभ करने का उनका कोई मकसद था या इस उद्देश्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। दरअसल उनकी विचारधारा एक साधक के नैतिकतावादी मार्ग से जन आंदोलनों को पैदा करने और उन्हें ऊर्जा देने का एक माध्यम थी और लोक में उनकी मान्यता ने इन जन आंदोलनों को ऊंचाइयां भी प्रदान की। वे कहीं असफल भी हुए तो अपने असाधारण उपकरणों की धार को तेज कर पुनः पूरी ताकत के साथ ब्रिटिश हुक्मरानों के सामने आकर खड़े हो गए थे। गांधी जी को पसंद करने वाले एक तरफ बहुत सारे लोग थे तो नापसंद भी कर रहे थे। उनके विचारों के साथ असहमति रखने वाले उनके समय में भी लोग थे और आज भी हैं। वो अपनी असहमति, अपनी अस्वीकार्यता किसी भी रूप में उनके सामने प्रकट करते हैं और जैसे ही मौका मिला असहमति जाहिर करने वाले लोगों को, उन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं आजादी के समय, जिस समय अगस्त 1947 में आजादी का दौर चल रहा था, हस्तांतरण हो रहा था, तो उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी महान है। मरने के बाद हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानेंगे, मुसलमान उन्हें फरिश्ता कहेंगे, ईसाई शांति का मसीहा कहेंगे, खुदा उन्हें लंबी उम्र दे, वे भारत को रास्ता दिखाएं, हमें भी लड़ने की ताकत दें, आने वाला समय भयंकर होगा, तब गांधी का नाम ही बल देगा। सीमांत गांधी एक मैसेज दे गए उस समय, गांधी का नाम ही बल देगा। और ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये अपने आप में बहुत बलदायी है। प्रकट करता है कि गांधी का जो नाम है, गांधी नाम का जो एक विचार है, जिसे हमने एक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है, वो दरअसल बहुत शक्तिशाली है। और आज हम कह सकते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, उन्हें अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है। आज के जो बदलते वैश्विक परिदृश्य में गांधी जी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, कई तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो अपनाए गए साधन और सिद्धांत थे, उनको आज भी अनदेखा नहीं किया जा रहा। और यही वजह है कि देश और विदेशों में, ग्लोबल लेवल पर भी हम विभिन्न स्थानों पर देखते हैं कि गांधी जी के सिद्धांतों और साधनों को अपनाकर वहां के आंदोलनों को खड़ा किया जाता है और उन आंदोलनों के जो नेता होते हैं वो अपने नाम के साथ गांधी का उपनाम रखते हैं और उनके जो अनुयायी होते हैं वो उन्हें गांधी के रूप में जानने में ज्यादा संतोष व्यक्त करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 2 अक्टूबर को सारा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है उस दिन को। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों और साधनों को की स्वीकार्यता है, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अस्वीकृति प्रकट करने का अधिकार सभी को है। जिस तरह से स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सभी को है, तो अस्वीकृति भी प्रकट करने का अधिकार सभी को है और लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि इसी स्वीकृति अस्वीकृति के द्वंद्व के बीच में गांधी नाम का जो विचार है वो हमेशा जीवित रहेगा। और वे सदियों तक, जैसे हम कबीर को याद करते हैं, जैसे हम नानक को याद करते हैं, जैसे हम बुद्ध को और महावीर को याद करते हैं या ईसा को, मोहम्मद को याद करते हैं, इसी तरह से गांधी जी को भी सदियों तक याद किया जाता रहेगा और समाज में उनके जो विचार हैं वो प्रासंगिक बने रहेंगे। बीडी कॉलेज के माध्यम से ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल वेबिनार हो रहा है, सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज के कोलैबोरेशन में हो रहा है, आपने मुझे
अपने विचार यहाँ व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं आदरणीय सुनीता मैडम और अविनाश जी का हृदय से आभारी हूँ। और आज के इस सत्र के जो चीफ गेस्ट हैं आदरणीय प्रमोदानंद जी का भी मैं आभारी हूँ कि उनके व्याख्यान से मैं काफी लाभान्वित हुआ। आप सभी लोगों ने मुझे बड़ा ध्यानपूर्वक सुना। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और जो डिग्निटरीज यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? हाँ, आ रही, आवाज आ रही। जी 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 सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी तो हम हैं, सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज है, बीडी कॉलेज है, कि आप हमारे समक्ष आए, हमारे साथ जुड़े और गांधी पर जो अपनी बातों को आपने रखा है, अपने विचार को रखा है, वो मन को कहीं छू जाता है। आपने गांधी के लोक मत की बात उठाई है कि हम चाहें या नहीं चाहें, चाहे अनचाहे, हमें गांधी को याद करना ही है। तो ये जो व्यक्तित्व है गांधी का, और जिसमें आपने उन्हें एक लोक पुरुष के रूप में रखा है, उनके जो सांस्कृतिक विचार हैं उसको रखा है, वो एक तरह से एकता से जुड़े हुए विचार पाए जाते हैं, अनेक रूप में हो सकते हैं। उसकी भी समीक्षा की जा सकती है अलग अलग रूप में, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या जातीय तौर पर देखें, वर्ण व्यवस्था के रूप में देखें, पर उनकी तरफ से ये कोशिश रही कि सांस्कृतिक रूप से भी हम अलग होते हुए भी जुड़ सके। ये विचार और ये भाव तो जरूर रहा। आपने ये भी कहा है, और इसीलिए शायद वो सबकी भावनाओं में उपस्थित हैं। उनके नाम को स्वीकार करना ही एक बहुत बड़ी लीगेसी अपने आप में है, कि हम गांधी की तरफ देखते हैं, एक उम्मीद है हमें। अगर हम उनको यूलोजाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाई नहीं कर रहे हैं, भगवान और ईश्वर का दर्जा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मानव है, महामानव तक हम पहुंचा पाते हैं उन्हें, बट उसके बियॉन्ड नहीं। पर हमें ये देखना होगा कि वस्तुतः जो उनकी बातें हैं वो लोगों तक पहुंच पाए, वो लोगों तक पहुंच पाए। तो जो उनका आउटरीच है, जिसको आपने बहुत प्रखर रूप से हमारे साथ साझा किया है, वो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है कि समाज के उस ग्रास रूट लेवल पर जो हम उनकी छवि, जो उनके विचारों का प्रभाव पाते हैं, या जब हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं और अन्य समुदायों की बात कर रहे हैं, वहां सीमांत गांधी की बात को जो आपने रखा है, तो वो भी दर्शाता है कि गांधी को लेकर किस प्रकार के विचार हैं और गांधी का क्या मैसेज हमें मिलता है। और इस विचार को लेकर ही जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस पूरे क्रम में हम ये भी देखते हैं कि जो आपने बात उठाई कि उन्होंने चरखा की बात को रखा, एक तरफ तो सीमांत गांधी अपनी बात को कह रहे हैं और कहीं कोई ऐसी भावना उनके मन में नहीं आती है जो गांधी के विरुद्ध जा रही हो, जबकि वो काल पार्टीशन का काल है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरी बात जो महिलाओं के प्रति भी हम इसे देखना चाहेंगे, और आपने इसे जनमानस के साथ जोड़ा है, मैं विशेष करके इसे महिलाओं के साथ भी जोड़कर देख देती हूँ, कि कपास और तकली और चरखे को उन्होंने सामने रखा। जो जनमानस की बात हुई कि उन्हें एक उपाय, लाइवलीहुड का एक जरिया और एक माध्यम उन्होंने बनाया। पर कहीं ना कहीं जब इस चरखे को वो एक मोटिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और नेशनल मूवमेंट में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण, उनके एम्पावरमेंट की बात उस पूरे डोमेस्टिक स्फीयर के अंदर जाकर उसको पॉलिटिसाइज कर देना, और डोमेस्टिक स्फीयर से भी पॉलिटिसाइजेशन को लागू करना, कि पॉलिटिक्स घर के अंदर बैठकर भी महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है, महिलाओं की गरिमा को बनाना और
साधारण वर्ग की महिलाओं को, साधारण वर्ग के व्यक्तियों को जो महत्व उन्होंने दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि उसमें भी गांधी की क्रिटिसिज्म है कि बुर्जुआ वर्ग के प्रति उनका झुकाव रहा, शहरी वातावरण के प्रति, पर गांव में तो उनका प्रवेश पहली बार एक बहुत लार्ज स्केल पर हम पाते हैं, बहुत बड़े रूप में हम पाते हैं। तो ये जो बातें गांधी को लेकर आपने उन्हें एक लोक पुरुष के रूप में रखा है, वो लौह पुरुष से अलग हो सकती हैं, पर लोक पुरुष के रूप में गांधी का स्वीकार किया जाना एक बिल्कुल विशिष्ट पक्ष है जो आपके द्वारा हम जान पाए, और जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं कि आपने इन विचारों को रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे फॉरेन डेलीगेट मेधिका जी को कि वो अपनी बातों को रखें, और कुछ समय के इसके कारण समीर जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं मेधिका जी से अनुरोध करूंगी, मैंने उन्हें टेक्स्ट किया है कि उनके विचारों को वो जरा संक्षेप में हमारे सामने कम से कम रख दे। उन्होंने टेक्स्ट किया है कि थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ पाएंगे, तो हम अनुरोध करते हैं आपसे। मेधिका जी, आर यू देयर विद अस? Yes, ma'am. So Actually, Mr. Sameer, he had some pressing engagement, so he had to go for that, and he just texted me that he'll try and join us sometime later. But he just sent me the synopsis of what he wants to speak on, so I'll just read it out on his behalf. Good morning to all the fellow speakers, the esteemed academics, and the budding students of our country. It is my pleasure to present before all of you my views on today's topic, Gandhi and his philosophy revisited. A few years earlier, I had the good fortune of visiting Genoa, a Mediterranean port located on the Ligurian coast of Italy. Genoa is an ancient port city with a long tradition of openness towards distant cultures. I was a participant at a panel discussion to celebrate the Risorgimento, or the Italian unification. From the discussion, it emerged that the events of the Italian Risorgimento are the subject of interest by leading exponents of similar national liberation movements in various countries that were under colonial or tyrannical domination, and in particular in India, where attention to the Risorgimento was relevant not only from a political point of view, but also from an ethical and social one, with particular reference to Giuseppe Mazzini. Gandhi, in fact, constantly kept in mind the process of national unification of Italy and recognized in Mazzini one of his main spiritual teachers, drawing useful reflections from the experience of the Italian Risorgimento to ward off errors in India and dangers in his struggle for liberation from British colonialism. In the later part of this seminar, I will examine in detail the relationship between these two exponents who were from different cultures, but with common principles and ideals, who were protagonists of the democratization process of their respective nations. Thank you. Thank you so much, Medhika ji, for bringing out the view of Sameer Kumar, who is in the scientific field and has been working and serving in the in Italy, and he was to join us, and let's hope that he can do so. He was earlier there in the group, I had seen. So I would now request you to just give your views very briefly on the Thoreau's philosophy and how you have linked it with Gandhi. So let me introduce you also as well, that our foreign delegate Medhika ji is from UNO, from United Nations Inter-Region Crime Justice Research Institute, Turin, Italy, and she would be speaking on Thoreau. So I now request you to express your views. Just the quintessence of what you have drawn. Yes. I stand here with a profound sense of gratitude to have been given this opportunity to speak on the philosophy of Gandhi revisited, an immeasurable task.
to which I humbly submit my views as a tribute to Mahatma Gandhi for having given us this direction of non-violence and conviction to serve humanity. With these thoughts, I explore the deep influence of Thoreau on Gandhi, which in turn shaped the ethical base of the Indian national movement under Gandhi. Gandhi acknowledged his debt to Henry David Thoreau on many occasions during his Satyagraha campaign in South Africa and later in his anti-colonial struggle in India. Henry David Thoreau's treatise on the duty of civil disobedience gave moral legitimacy to the obligation of the individual to disobey unjust laws. His critique of the state and his tendency towards individual dissent became an inspiration to practitioners of non-violence around the world, including Mahatma Gandhi. Gandhi acknowledged Thoreau in his preface to the English version of Hind Swaraj, which I had an opportunity to read many times, underlining that he has endeavored to follow Tolstoy, Ruskin, Thoreau, Emerson, besides the masters of Indian philosophy. Gandhi found ample confirmation for his new philosophy, which convinced him that conscience, not majorities, should have the ultimate say in judging what is politically right or wrong. If it is not one's duty to eradicate evil, it is certainly not one's first duty not to give support to it. To Gandhi, disobeying unjust laws provided the powerless population with an extraordinary moral power. Thoreau was not a revolutionary, nor did he consider civil disobedience as an act of revolution. He propounded the principle of human rights, which continues to inspire dissidents. Thoreauvian disobedience proved to be a case of conscience, the legitimization of a higher law. Thoreau distinguished between political law and moral law, as moral law represented the true dignity of the individual and humankind. What is wanted in men is probity, who recognizes a higher law than the constitution or the decision of the majority. Thoreau's concept of the law breathes the spirit of freedom into law, as he was a transcendentalist and a reformer. Ralph Waldo Emerson called Thoreau an actor of truth. Likewise, Gandhi's experiment with truth is based in the philosophical foundation of civil disobedience. To Thoreau and Gandhi, democracy is about the right of minorities and the art of celebrating diversity. They both made their life's work to introduce disobedience into a moral syntax. The history of non-violent resistance entered a new phase with the life and struggles of Mahatma Gandhi. Though Gandhi humbly dismissed Gandhism, but the world continues to feel and live the effects of his philosophy of non-violence. I would be presenting my views in detail on the inextricable links between Thoreau and Gandhi to the philosophy of non-violence later in this seminar. And this is all for right now. Thank you. Thank you very much, Medika ji. Thank you, madam. The two views that have come up, that Mazzini was the spiritual teacher of Gandhi, comes to us at a time when we are seeing that there is a discordant note between the Western philosophy and the Eastern thinkers of the time. So the Italian Risorgimento in itself was a long drawn, protracted struggle, which began somewhere in 1815 and was completed by 1875. So this is also one of the protracted struggle for freedom, for unification that we find in India. So the similarities and dissimilarities are there. So the two different exponents of their time, one is Gandhi, in whom we find that there is a lot of hope and the spirit to struggle till the last. And in Mazzini, also we find that he wants to carry on that struggle, but somewhere he laments, and the kind of dress code that he has of black somehow denotes a kind of despondency that he was developing towards the
barriers that they had to face at that point of time. But Gandhi took what he had to take from Mazzini and moved ahead in the national struggle. You yourself have talked about Thoreau and Gandhi, and the things that emerged from it is how Thoreau, through his treatise, cast an influence on Gandhi, and Gandhi brought these philosophical influences into his own thinking, into his life, and into his political strategy, which somehow makes him elevate his position, because to him, morality came first, where we eulogize Gandhi for basing this higher principle of ethics in politics, and that is where we derive that similarity and influence of on Gandhi of Thoreau. So thank you so much for joining us here in this two-day international seminar and presenting your perspective on this. So we are very grateful to have you here and Thank you, very ma'am. thankful. Thank you. It's my pleasure. Thank you. Thank you. So I now welcome our dignitaries who are there and would like to invite Runu Raviji, if you're around, if you could express your viewpoint. Do we have Runu Raviji with us? She was here with us for some time. Rakhi ji, Yes, ma'am. would you like to present your viewpoint? Yes, ma'am. The only request is that we have the time constraint. Okay, ma'am. Please Fine, fine. only bring about the quintessence in very few minutes. Okay. I'm Okay, ma'am. sorry to, yeah. Fine. Thank Good afternoon to, okay, shall I start? Yes, yes. Good afternoon to all the dignitaries present in this international seminar. Myself, Dr. present my paper on the topic, Mahatma Gandhi, an apostle of peace and reform. Here I try to focus over multifarious principles of Gandhian philosophy, that is, as I think, is the backbone of the society, because I feel that every individual is following these principles even in a singular manner in their day-to-day affairs. I pointed out about truth and non-violence that Mahatma Gandhi always followed in his socio political as well as ethical platform. Further in my paper, I had talked about if we look into the fabulous journey towards Indian national movement, Mahatma Gandhi has really marked him as an apostle of peace worldwide. He stood firm like a stone, like a rock, and added to the courage of his people by his own sacrifices and sufferings. Due to lack of time, I would like to end. I would like to conclude with a statement that the only solution to injustice and extremism today is to revisit and practice the values that Mahatma Gandhi had enriched us in totality. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for putting up your views. And the quintessence did come out, that he was an apostle of peace, and you've talked about how he placed it within the socio-political arena and had that pragmatic approach to bring his thoughts to the people so that they could carry it with them. The values remain. We have to see it as we see it and accept it. So that view, of course, is there. Thank you very much, Rakhi. Thank you. Thank you. Thank you. I now invite Dr. Sister Celine Krasta, head of the Department of History of Patna Women's College, to share. Ma'am, I'll join a little late. After Okay. 10 minutes, I will join. Okay.
Okay, okay. So meanwhile, is there anybody else who wants to present their viewpoint? Anuji is there? जी मैम। जी, आप अपने विचार रखना चाहेंगे? जी मैम। थोड़ा समय सीमा को ध्यान में रखेंगे और बहुत संक्षेप में बस अपनी बात को आगे कि आप जी कहना मैम। चाह रहे थे। जी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैम। जी। मेरा टॉपिक है महात्मा गांधी और चंपारण की तिनकठिया जूत प्रथा की ऐतिहासिक जी। झलक। अरे कोई बोले कि नहीं, पेपर पर महात्मा गांधी आवाज आ रही है किसी की। जी। यह ऐसा आंदोलन का रूप धारण किया जिसमें ने राष्ट्रीय आंदोलन का जन आंदोलन में परिणत करने में सफलता प्राप्त की थी। नीलहों के अत्याचार से पीड़ित चंपारण के किसानों ने गांधी को अपना मुक्तिदाता मानने लगे थे। इस प्रकार गांधी जी ने भारत की भूमि पर स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया और चंपारण की इस पावन भूमि पर उन्होंने एक ऐसा अस्त्र का सफल परीक्षण किया जिसके बल पर ही उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। गांधी जी के सत्याग्रह के कारण चंपारण हिंसा की राजनीति में फंसने से बच गया और गांधी को उद्धारक होने का यश पूरे भारत में फैल गया। 1777 ईस्वी में सर्वप्रथम लुई बर्नो नामक एक फ्रांसीसी ने बंगाल सूबे में नील की खेती की शुरुआत की। लुई बर्नो के कार्य से प्रोत्साहित तथा नील के व्यापार में भारी मुनाफे को देखते हुए कैरम ब्लूम नामक एक अंग्रेज व्यापारी ने 1778 ईस्वी में सर्वप्रथम नील की कोठी खोली तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को सूचित किया कि नील की खेती बड़े मुनाफे का साधन बन सकती है। कैरल ब्लूम ने तत्कालीन गवर्नर जनरल को एक स्मृति पत्र भेजा जिसमें बड़े पैमाने पर नील की खेती करने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात अगर देखेंगे तो प्रारंभ में चंपारण में जब नील की खेती अंग्रेजों द्वारा की जाती थी तो उनके पास अपनी भूमि नहीं थी, न ही किसी भी भूमि पर उनका अधिकार ही था। बेतिया राज्य से गांव का चंद रोज ठेका लेकर वे उनमें कुछ नील जिरात प्रथा से करवाते थे। यह कार्य बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता था। नीलहे गोरे बेतिया के राजा को लालच देकर गांव का जमा जितना वसूल हो सकता था वह कबूल कर लेते थे और अपने लाभ के लिए रैयतों से नील की खेती करवाते थे। बेतिया के राजा को बैठे बैठे मालगुजारी मिल जाया करती थी। कोठी वालों को भी नील से बड़ा लाभ होता था। बीच में मारे जाते थे बेचारे रैयत। जब कभी कोई गांव कोठी के कब्जे में आता था तो कोठी की यही चेष्टा होती थी कि उस गांव में जहां तक संभव हो ज्यादा से ज्यादा नील की खेती कराई जाए। इसके लिए वे भोले भाले रैयतों को समझाकर आप गांधी जी की भूमिका पर आ जाएं। गांधी जी की भूमिका पर आ जाएं, चूंकि समय का बहुत अभाव है। जी। तरह का जो निकला वो रैयतों की मांग से बहुत कम था, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि रैयतों में एक नई जागृति। इस तरह गांधी ने नीलों के अत्याचार से चंपारण की ने एक राष्ट्रीय नेता होने के नाते स्थानीय नेताओं की तुलना में सत्याग्रह का ज्यादा व्यापक में देखने का अवसर समझा। रैयतों का विश्वास स्थानीय राजनेताओं और जन आंदोलनकारियों से उठ गया और गांधी की ओर से तेज सादगी से वे प्रभावित हुए। ऐसा निर्णय लेने में उन्होंने काफी सोच विचार किया और उनके साथ जी जान से जुट गए। और सबसे बढ़कर तो क्योंकि इस अशांति के अगले मोर्चे में गांधी को स्थानीय नेताओं ने पेश किया था, इसलिए कांग्रेस ने भी इस आंदोलन का श्रेय लिया। परिणाम यह हुआ कि बिना मुकदमा दायर किए ही नीलवरों को मनोवांछित फल मिल गया और बेचारे अशिक्षित असहाय रैयतों की चेष्टा नील के अत्याचारों से छुटकारा पाने में विफल हुई। ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि किसान लोग स्वभावतः डरपोक होते थे और विशेषकर चंपारण जैसी जगह के लोग और भी सीधे साधे होते थे। नीलवरों के कहने से एक विशेष अदालत का स्थापित होना ही उनके लिए बहुत था। कौन कह सकता है कि रैयतों ने यह नहीं समझ लिया हो कि सरकार ने उन नीलवरों का पक्ष लेने के लिए ही खास अदालत कायम की है। फिर इस बेजोर की लड़ाई में रैयतों की जोत की कोई आशा नहीं हो सकती थी। थोड़े बहुत जो मुकदमे अदालत में गए भी तो उनका फैसला रैयतों के विरुद्ध ही हुआ। इसमें संदेह नहीं कि सरकार रैयतों के साथ चाहे जितनी सहानुभूति रखती रही हो, पर उनका परिचय बराबर इसी रूप में मिलता रहा कि जब जब रैयतों ने
सर उठाने की कोशिश की, तब सरकार ने कुछ ऐसी कार्यवाही कर दी बस जिससे बात को वाइंड अप कर ले। मैं जी, इतना ही कहना चाहूंगा मैं। बात को वाइंड अप कर ले। जी जी थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका अनुज जी कि आपने चंपारण के सत्याग्रह की बात को भी उठाया है। और गांधी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है ये, शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध जो पहली आवाज यहाँ उठी वो गांधी के नेतृत्व में उठा। पहली एक पहल थी सत्याग्रह की जिसकी सफलता का आंकलन देखा जा सकता है। और आपने एक बात कही कि डरपोक थे किसान। मुझे ये शब्द लगा कि इसे हमें रिप्लेस करना चाहिए। डर से ज्यादा उनकी लाचारी थी कि उनकी पहुंच नहीं थी। जहां राजकुमार शुक्ल आते हैं और एक उनके रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ही गांधी का आगमन यहाँ संभव हो पाया। और वो जो एक इंटरवेंशन की आवश्यकता थी और एक जो ऑपरेशन से, शोषण से उन्हें मुक्त करना था, उसकी जो एक भूमिका बंधी, उससे हम एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका अनुज जी। थैंक यू। जी, मॉडरेटर के रूप में भी मैं ये कह रही हूँ। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मोहम्मद जमील हसन अंसारी जी को कि वो आए और अपनी बातों को रखें। जी, मोहम्मद जमील हसन अंसारी जी, आप अपनी बातों को रखें। आवाज जा रही है आप तक? मोहम्मद जमील हसन अंसारी जी। जी मैम, थैंक जी यू मैम। आप जी जी मैम, आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं इस 2 दिवसीय सेमिनार में शामिल सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे शोध आलेख का विषय है चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी। वैसे तो इतिहास की हर घटना की शताब्दी आती है और उसे 100 साल पुराना बनाकर चली जाती है। हम भी इतिहास को बीते समय और गुजरे लोगों का दस्तावेज भर मानते हैं, लेकिन इतिहास बीतता नहीं है बल्कि नए रूप और संदर्भ में बार बार लौटता है और हम जनमानस को अपने अतीत को जानने का उम्मीद जगाता है। साथ ही इतिहास के तत्वों के माध्यम से हमें मजबूत करता है ताकि हम अपनी आंखें खोलें और अपने सौंदर्य इतिहास को पहचाने। दरअसल इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं कि वे जब भी आपको या आप उनको स्मरण करते हैं तो आपको कुछ नवीन इतिहास का बोध होता है। इसे पारस स्पर्श कहते हैं। इतिहास के इसी पारस स्पर्श से गांधी को वह मिला और वह बने जिसकी खोज उन्हें थी। यानी इतिहास ने जिसके लिए उन्हें गढ़ा था वह गांधी का स्पर्श ही था, जिसने अहिल्या जैसे पाषाणवत चंपारण को धधकता शोला बना दिया। और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी की दोपहर में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए लोगों ने जब राजकुमार शुक्ल जैसे एक अनाम आदमी के साथ मोहनदास करमचंद गांधी को साथ देखा तो अहम ऐतिहासिक मौका ही था जो उनके आगमन से न केवल उनके इलाकों के लोगों के लिए बल्कि स्वयं महात्मा गांधी के सत्याग्रह को भी मूर्त रूप देने का पहला प्रयास था। बिहार को भारतीय सभ्यता की श्रेणी भूमि कहा गया है, किंतु 18वीं शताब्दी आते आते अपनी विज्ञात ऐतिहासिक उपलब्धियों के बावजूद वह बंगाल का परिशिष्ट राज्य बनकर रह गया। सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से बिहार में गांधी का आविर्भाव हुआ। जैसे 1857 की घटनाओं के लिए यदि एक नामकरण करना होता है तो देना होता है तो हम महात्मा गांधी की ओर इशारा करते हैं। राष्ट्रपिता का सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। महात्मा गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का श्रीगणेश मिथिलांचल के पश्चिमी छोर स्थित चंपारण से किया और उत्तर बिहार का चंपारण जिला तब बटा हुआ नहीं था। और 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने मोतिहारी में कदम रखा। उस दौर का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण मिशन 1917 भारतीय जनमानस के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जिसने यूरोप के नीले प्लांटरों के दशकों से जारी नीलों के अत्याचार से चंपारण की रैयतों की जान माल की रक्षा की और आर्थिक एवं सामाजिक शोषण एवं आतंक से चंपारण के निरीह रैयतों का उद्धार किया। गौरतलब है कि 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू हुई महात्मा गांधी के सत्याग्रह ने उस समय
भारत में काबिज ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींदें उड़ा दी एवं नतीजतन चंपारण से ही उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। गांधी की जानकारों की माने तो उसके ठीक 2 साल बाद 1919 में गांधी पहली बार दरभंगा पहुंचे थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में दरभंगा के प्रमुख वकील ब्रज किशोर प्रसाद एवं धरणीधर प्रसाद की अग्रणी भूमिका थी। ब्रज किशोर बाबू के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महात्मा गांधी का सत्य एवं अहिंसा का प्रकट संदेश मिथिलांचल में व्याप्त होने लगा। इसका यह असर हुआ कि मिथिलांचल के हृदय स्थल प्रदेश दरभंगा में स्वतंत्रता आंदोलन की चारों ओर ध्वनि गूंजने लगी। अब क्योंकि मैं निष्कर्ष के रूप में मैम कुछ कहना चाहूंगा कि चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को जनता के मध्य पहुंचा दिया तथा उन्होंने जनता की मांगों व तकलीफों को जानकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष मजबूती से जनता के पक्ष को रखने का कार्य किया। इसके अलावा गांधी जी की सत्याग्रह व शांतिपूर्ण विरोध की रणनीति ने गांधी जी को जनमानस के निकट पहुंचा दिया। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम से अहिंसा के रूप में आजादी की लड़ाई को नया हथियार मिला। इस प्रकार गांधी जी ने भारत की भूमि पर स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया। चंपारण की इस पावन भूमि पर उन्होंने एक ऐसे अस्त्र का सफल परीक्षण किया बल पर ही उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने की सफलता प्राप्त को उद्धारक होने का यह पूरे सकता है। इस चंपारण सत्याग्रह में भारत में गांधीवादी आंदोलन का प्रथम सोपान था, साथ ही कई दृष्टियों में किसान एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का परिवर्तनकारी बिंदु था। धन्यवाद मैम। मैम आवाज नहीं आ रहा आपको, माइक बंद करिए। अब आवाज आ रही है? मैम अब आ रहा है। Yes, ma'am. आपका बहुत धन्यवाद कि आपने एक्सप्लॉइटेशन की बात को रखा और प्लांटर्स तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे और जो साथ मिल रहा था उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी गांधी को यहाँ आप एक उद्धारक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उद्धारक के रूप में आपने रखा। और दूसरी बात जो आपने उठाई उनके संदर्भ में कि वो शांतिपूर्ण विरोध की नींव उन्होंने यहाँ रखी और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया, और ये जो स्ट्रैटेजी उनकी रही वो आगे चलकर भी हम पाते हैं कि उनके राष्ट्रीय आंदोलन में एक अनुभव उनका बना, जिसके आधार पर उन्होंने आगे भी इसे एक अपनी रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि इस रण में हिंसा का उपयोग नहीं था। बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद जमील हसन अंसारी जी। थैंक यू मैम। Now I call upon the other speaker. Thank you. Now I call upon other Priyanka and Dr. Shreya there. Hello. Dr. Hello. Priyanka, Yes, ma'am. I'm here. Dr. Shreya. Hello. Yes. Ma'am, I'm Yes. Priyanka. So we welcome you. Yes, you're Priyanka. I can make out from your voice. Please share your views with us, Priyanka. Thank you, ma'am, for giving me this chance. So a very warm good afternoon to all and all present in this online conference, online seminar. The topic of my paper is Gandhi at the eve of independence in Bihar. Just introduce yourself, Priyanka. Okay, I'm Priyanka from Patna Women's College. I'm assistant professor in the Department of History over there. So as I told you that my topic is Gandhi at the eve of independence in Bihar. So basically I focused the activities of Gandhi during the independence time. So our independence came with a large scale of bloodshed and communal disturbances. Bihar, which was a great place of Gandhian movement, saw a serial killing of minority section and their displacement. In the night between August 14 and 15, when Jawaharlal Nehru was making his famous speech, Tryst with Destiny, Bihar was burning. In Bihar, riots were just happened after Calcutta killings,
as well as Noakhali riots. Ethnic cleansing of Muslims in Magadh was the biggest challenge. In 1946, Magadh riots were part of a series of incidents of yes. communal violence I across can. North India. Rhythm. A large number of Muslims were killed. Famous writer Kaleem Aziz's whole family was killed in Telhara, Nalanda district. It is astonishing that Bihar, the land of Gandhi and the main area of the peasant movement, came under the severe grip of communal riots. In this horrifying situation, 78-year-old Gandhi was walking village to village. He was upset. To me, peace between Hindus and Muslims is more important than the declaration of independence, was the words from him. He said, I would prefer to die rather than live in an India where such brutalities are practiced. 20th April 1947, a report of the Bihar government said that communal tension was increasing, but things didn't stop. On 26th October, there was a strike in Patna, Chhapra, and other cities. The riots continued on 27th October as well. The riots spread in the cities of Jahanabad, Banka, Bhagalpur, etc. The danger of spreading riots also appeared in Santhal Pargana. So here we can see how the riots were covering the entire Bihar. In this scenario, in a speech at prayer meeting in Patna, Gandhi said, if Muslims believe that they would annihilate the Hindus, or if Hindus believe that they would annihilate the Muslims, I should like to ask them what they would gain thereby. Muslims will not serve Islam if they annihilate the Hindus. Rather, they would thereby destroy Islam. And if the Hindus believe that they would be able to annihilate the Islam, it means that they would be annihilating Hindu Dharma. This was the religious ideology of Gandhi. So there is a very limited time, so I cannot read my paper and different aspects of it. So I would just like to focus on the main aspects. Like during this period, Gandhi visited entire Bihar. He visited Kumhrar, Khushrupur, Masorhi, Okhri, and Kako in Jahanabad. So these places were visited by him. He also visited Bard on May 15th. He held meetings at Hilsa and Vikram respectively. It was surprising why and how Bihar was made the site of communal riots. As we know very well that there was a wave of popular action in Bihar. At that time, there were many strikes over food and clothing, cut in rations, and tensions in the labor world. After all these popular agitations, Bihar became the site of biggest communal tension. It is surprising that no serious scholarly attention has been paid to the study of modern Bihar, which provides the reasons for the communal riots of 1946. Seeing that was happening in Calcutta, Noakhali, and Bihar, the secular ideal of many Congress workers and leaders was lost. All over, the growing strength of Hindu and Muslim communalists and the dual character of the Congress leadership had pushed Bihar in a wrong direction. But Gandhi's efforts were turned to reality. Lord Mountbatten, noting this, wrote, in Punjab, we have 55,000 soldiers and a large-scale rioting on our hands. In Bengal, our forces consist of one man, and there is no rioting. However, 78-year-old Gandhi, who was consistently cut off from Congress, visited the villages of Noakhali and then Bihar with a real courage and put his life at stake to prove his theory. His character and true greatness had never been revealed before, which happened in the last days of his life. His presence sometimes produced miracles. In this situation, Gandhi not only delivered speeches, but also encouraged and raised funds for the victims of the violence and responded to the letters regarding the issues and addressed meetings personally, all to curb the series of riots.
On the 15th August, Gandhi was only concerned that the people of India should put first thing first and not to turn in the day into a mere glorification. Those who were with him would join him in prayers and fasting. Fasting was also appropriate as a reminder that the semi-starved farmers in the village could not celebrate by eating more food on that day, however much they might wish to. So fasting was a reminder that the primary purpose of the freedom from foreign rule was to overcome the country's vast poverty. Gandhi wanted to remember the poor and the hungry on the first day of our freedom. So these were the views of Gandhi on the eve of independence. Thank you. Thank you, Priyanka. Ma'am, I have joined. This is Shreya. Okay, so just give me a second. Okay. Priyanka, she spoke on the bloodshed and that came with the communal Independence. issues that were there in different parts of Bihar, because Bihar has generally remained out of this communal strife. So this became a site of communal strife for a while. And this aspect has been touched upon in your paper, which brings about a different aspect of Gandhi. And you spoke that he was concerned about the poverty that people had to face. The problem still remains with us. The poverty index of the time shows that India is much below in the rank of poverty index. So it was an issue that had been focused on by Gandhi, but it remains marginalized and we need to look into it. So thank you for your paper presentation and your viewpoint, Priyanka. I now call Thank you, ma'am. Shreya to give her viewpoint. She is also an assistant professor in the Department of History of Patna Women's College. And I would also like to say that our chairperson is here who would like to give his comments. So I'm just acting as a moderator to call the participants and delegates to give their viewpoints. So he would be giving his own observations on the papers that have been read. So Shreya. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good afternoon, everyone. This is Shreya, Department of History, Patna Women's College, and my paper is on projection of Mahatma Gandhi as a naive educationist. Understanding true education is the genesis of education itself. The imperialistic texture added to the Indian education system by the British government was suitable for the manufacture of white-collared nerds only. India was under the umbrage of abysmal situation. The concept of Nai Talim, that was obviously propounded by Mahatma Gandhi, was not actually a system of education, but a philosophy for life. It was an ideology which worked on the twin principles of education for mind and inculcating the habit of self-sufficiency through the practice of various skills. It started as a remedy to the contorted style of English education that was facilitated by British sovereignty in India. The most conspicuous aim of Nai Talim was to discourage the set of school attenders who were mere candidates to pass the exam or complete their syllabus and appreciate among the students an unending appetite for knowledge. And what I think is that today also we miss that unending appetite for knowledge. Nai Talim incorporated the idea of synchronizing the mind, body, and soul through the threads of true education, physical labor, and attitude of service towards the society. The tenets of Nai Talim were not only restricted to the process of imparting knowledge, but also concerned themselves towards converging the flow of energy of young ones towards niche
was of course nice to participate in communities. It also advocated the use of regional languages in place of alien tongue that was English. The concept of Nai Talim that was given by Mahatma Gandhi came at the nick of time when people needed to decolonize their minds from fear and relinquish their obedience towards everything that was alien. It was appreciated then, adopted and practiced then, but does it still maintain its relevance in status quo? There exists an unending list of ordinances passed by ruling governments to bring about educational reforms. But the main question, the pertinent question is that have we paced ahead of the man and queen of clerical education, or that white-collar nerd type of stereotype that was devised for us by the colonial rule? The paper, while writing the paper, I went through various primary and secondary sources. Secondary sources, of course, were the books I referred to that was written on education, not only by Gandhi, but also by famous people like John Dewey and many more. But I also read some of the letters that Marjorie Sykes, she too was an educationist, and she came to India and worked towards imparting a community service into education. So the letters she wrote to Gandhi, or the way she thought about this Nai Talim, I use all those sources while drafting my paper. And I have also used some of the case studies through which we can correlate that not only in India, but the concept of Nai Talim, or incorporating the concept of holistic development while educating the child, has been practiced by many nations, not just India, but Finland. Even in China, they teach their children to make green tea. So that was really a revolutionary concept. So through this paper, I have just tried to motivate, or just marshal the cause of true education among my readers. Thank you. अनम्यूट कर लीजिए सुनीता जी। आवाज अब आ रही है? हाँ आ रही है, और संजय जी भी मैम, आ रही है। लगातार जुड़े हुए हैं। जी, तो तो कल मैं तो नहीं उन्हें आ पाए, तो संजय जी जी को भी लैंसडाउन जी उत्तराखंड से वो जुड़े हुए हैं अभी। जी जी 2 मिनट उनका भी करके और हम लोग तो फिर जी वाइंड अप की ओर बढ़ेंगे। जी, सिस्टर सेलीन भी वेट कर रही हैं, तो मैं संजय जी को पहले आमंत्रित कर लेती हूँ, फिर सिस्टर सेलीन को के बाद। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बहुत हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा करिए। और आपने जो अपने लेखनी में हम लोगों के साथ आप पहले ही जुड़ चुके हैं, आपके विचार हम लोगों के समक्ष आए भी हैं, पर हम चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने जुड़कर अपनी बातों को प्लीज रखें। आप उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं, हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। संजय जी, आप जुड़ रहे हैं क्या? मेरी आवाज जा रही है? जी, अब आ रही है। जी, अब आ रही है आपकी आवाज। संजय जी को मैं उनका परिचय दूं कि वो उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेज में है, प्रिंसिपल हैं, पर he is a profound scholar. So that is my introduction to him, and it would be great hearing him and learning from him. जी संजय जी, अब आप अपनी बात रखें। संजय जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? संजय जी की आवाज आ नहीं रही है, स्क्रीन पे भी नहीं है।
हेलो। जी, आवाज अब हेलो। आपकी आ रही है। हेलो। हाँ जी हाँ मैडम, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। जी जी जी, आपकी भी पहुंच रही मैं है। अपनी बात शुरू करूं? जी सर। थैंक यू। जी मैं बिना कोई औपचारिक संबोधन के अपनी बात को 2 मिनट में वाइंड अप करूं कि जी मेरा जो टॉपिक है द मेकिंग आइडिया इमेज इमेज। संजय जी आवाज फिर आपकी कट गई है। एक्चुअली संजय जी काफी ऊंचाई पर हैं उत्तराखंड में, पहाड़ पर, और वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। उस प्रॉब्लम के कारण हमको लग रहा है जी थोड़ा सा। संजय जी आप, हाँ फिर आवाज आ रही है लेकिन कट जा रही है। हेलो। जी, आवाज आ रही है। अविनाश आवाज आ रही है संजय जी, बोलिए। बीच बीच में कट रही थी लेकिन आ रही है आवाज। है लिखा था गांधी और कबीर, और उस लेख में एक सामान्य परिचय है। प्रथम PhD और वो उस जमाने की PhD, इस जमाने में संजय जी की आवाज पहुंच नहीं पा रही है। संजय सर लेफ्ट हो गए मैम। अच्छा। हेलो जी। चैनल बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं हेलो। हाँ आवाज आ रही है लेकिन कट रही है। चलिए आपका प्रोसीडिंग वैसे आलेख नहीं नहीं नहीं, हो चुका है। नहीं नहीं, अविनाश जी छोड़ चुकी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी, हाँ आवाज बहुत कट रही है आप। मसला है तो जी जी। हाँ, सुनीता मैडम आगे बढ़ा लीजिए काम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं कौन? सुनीता जी अनम्यूट कीजिए और जी नेक्स्ट जी हो स्पीकर गया। को जी हाँ मैं अब आई वांट टू
call upon Dr. Sister Celine Krasta, Head of the Department of History, Patna Women's College. Sister Celine. Good afternoon to, Yes. yes, good afternoon to one and all present on this online platform. I'll speak on the topic of Gandhi, a man of compassion. Gandhi believed that all human beings are God's special people and must be treated equally, irrespective of their caste, color, language, creed, region, religion, and ethnicity. Mahatma Gandhi believed in religious pluralism and campaigned for the empowerment of untouchables, whom he called Harijans. Gandhi lived a very simple life and dedicated most of his years of his life fighting for the rights of the people. Gandhi was a man for others. His heart went out to the suffering, the last, the least in the society. Suffering due to inequalities prevailing in the society, communal tension, poverty, illiteracy, or due to the age-old customs and practices. Gandhi's compassion for women, sensitivity for the problems of women as the weakest among the weak was another trait of Gandhi. Gandhi had sent a team of workers to study and report on the problems of Champaran district. But the report they gave him did not refer to any problems of the women there. How can any report be complete without an account of women's problem? He asked. The workers told Gandhi that the women of Champaran are very shy and would not meet them. He then sent deputed Kasturba Gandhi and to study the matter, and they realized the pathetic condition of women. And it is still Gandhi's determination not to rest till the honor of these women were restored. Besides, he had taken many economic activities for the empowerment of women. Since due to positive time, I'll cite only a few examples. Gandhi's compassion for the homeless. Here I would like to narrate an incident in the life of Gandhi, where 3 young girls of Noakhali, and who are the members of the Gandhi's Peace Brigade in Noakhali, were forced to had to remain in a Muslim family because there was a threat to their lives. So after when everything was over, peace was restored, they went back to their parents' house. They were not welcomed in their family. Parents said, you go anywhere, go to the streets, but you have no place in our house. The only shelter for these uprooted girls was Gandhi's ashram, which was a refuge for all those who were disowned and disinherited. Gandhi's compassion for the servants. He never treated them as servants, but treated them as members of the family. He said, people who want to serve humanity don't discriminate between an employer and a servant. Gandhi's compassion for the poor and the penniless. He traveled to the length and the breadth of our country, India. He visited villages of the poor state of Orissa. He realized the pathetic scene of the people there, hungry, thirsty, pale, women without clothes. Gandhiji had very soft feelings for Orissa compared to other states. Gandhi's compassion for Harijans is quite well known to each one of us. Gandhi sat with them and they were very happy. He opened the doors of his ashram to the poor Harijan family. The news went around among the Orthodox families and they stopped donating money. Madan Lal Gandhi, who was in charge of the management of the ashram, said, Bapuji, the store is almost empty. What should we do next? Gandhiji assured him, have faith in God. When nothing remains, we will go to the Harijan colony and work for our earning our livelihood. But we will still not leave the path of truth. Thus, Gandhi's compassionate heart reached out to the suffering humanity, be it women, children, youth, poor, homeless, Harijan, and those who hurt and harmed him, or those who suffered in any way. His compassion brought conversion of hearts, made enemies into friends. It softened even the stony heart.
I could have cited many more examples, but due to the paucity of time, I'll limit here. Mountbatten, who was clothed in military uniform all his service life, holding arms in his hands, realized the strength and courage and the spirit of compassion of a sensitive human being called Gandhi. During the partition, Gandhi, who was opposed to the partition, said, "I'm committed to non-violence. I have a feeling of compassion." He was a man of gentleness. It reminds me the words of Christ, whom Gandhi admired, called him the greatest teacher, and whose teaching he practiced in his life. "Learn from me, for I am meek and humble of heart." In him I see the Napoleon who could infuse spirit of patriotism in the most weak, impoverished army. In him we see the Akbar, who though unlettered, derived the goodness from every religion. In him we see Ashoka, Buddha with his concept of welfare of all. In him we see the Mahavir with his universal love for every living organism. Gandhi is a man to be remembered. He is a guiding force to the present and future humanity, a man relevant to all times. Thank you. Thank you, Sister Celine, for bringing out this aspect of Gandhi as a person of compassion. You've particularly focused on women, the serving people servants and Harijans, the poor and homeless, and how he showed his sensitivity towards them and perhaps inspired others to show their concern for this marginalized section who remain marginalized within themselves as well. So thank you, sister, for putting up your perspective. We would now like to call upon any other person who wants to share his or her viewpoint. Niyati. मैम मैं बोलना चाहूंगी रांची से। जी, रांची से आप हैं। जी, बोलिए। जी, जी, समय का ही थोड़ा अभाव है, बस अपनी बात को आप जरूर रखें, मैं भी ये चाहती हूँ। जी 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 इस मंच से जुड़े सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं नियति कल, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर केंद्रित इस सेमिनार में मेरे व्याख्यान का विषय है महात्मा गांधी और देश की भाषा। गांधी जी के विचारों को पढ़ने से हम आसानी से समझ सकते हैं कि वे आजीवन दलितों, शोषितों के साथ खड़े रहे। उनकी नजर में स्व का अत्यधिक महत्व रहा। स्व का अर्थ होता है अपना, निज का, या अंग्रेजी में सेल्फ हम कह लें। स्वदेशी, स्वराज्य, स्वनिर्भरता और स्वभाषा उनके विचारों के मजबूत आधार स्तंभ हैं। उनके विचारानुसार विदेशी संस्कृति को अपनाने में जितनी ऊर्जा व्यर्थ नष्ट की जाती है, उससे बहुत कम प्रयासों में हम अपनी संस्कृति, संसाधनों के साथ तरक्की कर सकते हैं। गांधी जी यह समझते थे कि प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय भाषाएं कारगर हैं, परंतु अखिल भारतीय स्तर पर संवाद की भाषा हिंदी ही होनी चाहिए। अपने अनुभवों से उन्होंने समझ लिया था कि देश के अधिकांश लोग जिस भाषा को समझ सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं, वह हिंदी ही हो सकती है। इसी कारण यंग इंडिया में उन्होंने लिखा है, लेकिन मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी हंसी उड़ावे, उससे शर्माए या उसे ऐसा लगे कि वह अपने अच्छे से अच्छे विचार अपनी भाषा में नहीं रख सकता। आज हम देखते हैं तो गांधी जी की भाषा संबंधी अवधारणा पूरी होती दिखाई पड़ती है। भारत के सभी राज्य अपनी अपनी भाषा में काम करते हुए हिंदी को एक सार्वदेशिक भाषा के रूप में अपना चुके हैं। विश्व के विभिन्न मंचों पर भारतीय अब हिंदी में अपने उद्गार प्रकट करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के साहित्य का आदान प्रदान हो रहा है। हाँ, अभी भी हिंदी में विभिन्न विषयों पर स्तरीय पुस्तकों का अभाव है, पर यह कमी भी हिंदी में जल्द ही दूर हो जाएगी। अपनी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्ति के चरित्र को भी दर्शाता है। इस बात का हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। गांधी जी भी कहते थे, भाषा तो अपने बोलने वालों के चरित्र और विकास का सच्चा प्रतिबिंब है। इन्हीं बातों के साथ आज 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी बातों को
विराम देती हूँ, समाप्त करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मेरा भी पेपर प्रेजेंट करना है। हेलो, आप अनम्यूट होइए हेलो। सुनीता जी, आप अनम्यूट होइए। आप मोबाइल पर हैं उस, हाँ आप कीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। हो रहा है, हो गया। हाँ, जी जी। तो मैं नियति कल्प जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सांस्कृतिक पक्ष को रखते हुए भाषा की बात को उठाया है और अपनी बातों को रखा है। उनको बहुत धन्यवाद। और अब खुशबू जी अपनी बात को कहें, क्योंकि हमारे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं। देवेंद्र जी हैं, नेहा है, अंजलि आनंद है, दीक्षा है, अविनाश जी, और भी कुछ नाम होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी कम से कम अपने विचारों को थोड़ा रख पाए। फिर हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इंतजार कर रहे हैं कि उनके विचार भी आएंगे, प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी। जी, तो खुशबू जी आप अपनी बात को रखें। जी जी, थैंक यू मैम। आज वर्चुअल मीटिंग में के जरिए जुड़े सभी गण्यमान्य और विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू MM महिला कॉलेज, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत। त्याग एवं तपस्या की प्रतिमूर्ति पूरे विश्व को शांति, सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पहले कोटि कोटि नमन। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर एक राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने का कार्य करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। हाल ही में 2021 की स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। इंदौर शहर, जो मध्य प्रदेश का शहर है, लगातार 5वीं बार भारत का सबसे साफ शहर के रूप में चुना गया है। एक लोकगीत भी है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। इसको भी स्वच्छता से जोड़ दिया गया है, ताकि हम अपने साथ साथ अपने वातावरण को, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। स्वच्छता से अभिप्राय है कि साफ सफाई खुद को साफ रखने से लेकर अपने आसपास के वातावरण की सफाई। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गांधी जी की 145वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 के शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ किया है। गांधी जी का सपना पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का था। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी कहीं ज्यादा जरूरी है, परंतु आज की दुर्दशा यह है कि घरे से निकले हुए कूड़े कचरे को हम रास्तों पर फेंक देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान गांधी के ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम का ही एक रचनात्मक अभियान है, और यह अभियान कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है, बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक ऐसा जन आंदोलन है जो गांधी मार्ग से गुजरता हुआ राष्ट्रीय स्वच्छता और समृद्धि का लक्ष्य हासिल करता है। कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। इसका अर्थ है, गलत आहार के कारण, गलत विचारों के कारण और गलत जीवन पद्धति अपनाने के कारण रोग पैदा होते हैं। इसलिए गांधी जी अक्सर ग्राम सफाई की बात करते थे। इन्हीं के शब्दों में, जिस जगह शरीर की सफाई, घर की सफाई और ग्राम की सफाई हो तथा युक्त आहार हो, योग व्यायाम हो, वहाँ कम से कम बीमारी होती है, और अगर चित्त शुद्धि भी हो तो कहा जा सकता है कि बीमारी का प्रवेश असंभव हो जाता है। अतः स्वच्छ भारत अभियान कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा सादगी और आरोग्य प्राप्ति की दिशा में एक जन आंदोलन है, जिसका उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही है मेरी? जी मैम। जी, आपका बहुत धन्यवाद खुशबू जी कि आपने स्वच्छ भारत को गांधी के साथ जोड़ते हुए वर्तमान तक लाकर
प्रस्तुत किया है, विभिन्न पक्षों को रखा है और ये बात भी हमारे सामने आई है। जी, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी, हमारे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं। क्या अंजलि आनंद जी हैं जुड़ी हुई, या नेहा, देवेंद्र जी, दीक्षा, कोई अपनी बात कहना चाहेंगे, या फिर वैलिडिक्टरी में आप लोगों को जैसा आप उचित समझे? जी देवेंद्र गुप्ता में दीक्षा जी। है, देवेंद्र जी हैं, हाँ, जिनको है जल्दी क्विक अपना जी, रिस्पांस दीजिए। जी जी, क्योंकि आप लोग जुड़े जी हुए मैम, हैं और देवेंद्र आप में गुप्ता। भी निराशा नहीं होनी चाहिए। जी यस मैम। जी मैं समय को देखते हुए काफी संक्षेप में मैं जी जी अपनी बात को जी। रखूंगा। सर्वप्रथम सभी विद्वत जनों को प्रणाम। मैं 1920 में अपने साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी के यंग इंडिया में एक प्रसिद्ध लेख में वो लिखते हैं कि अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशु का धर्म। परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। यह बात उन्होंने भारत कायरता पूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। यह शब्द उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि आपके भारत को या आपके सम्मान में अगर ठेस पहुंच रही है तो आप अपनी बात को पूरी दृढ़ता पूर्वक आप रखें। तो यही शब्दों के साथ में थैंक यू मैम। जी, बहुत अच्छे विचार हैं और आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता भी है। बहुत धन्यवाद आपका। और कोई अन्य रिसर्च स्कॉलर अपनी बात रखना चाहेंगे? अविनाश जी, आप अंजलि सहायता आनंद कर है, सकते हैं? अंजलि आनंद, स्वाति राय, दीक्षा, जो भी जल्दी करे क्योंकि फिर वैलिडिक्टरी का हो जाएगा, टाइम हो रहा है। किन्हीं को बोलना है या मैडम फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगी? हम तो अनुरोध करेंगे अपने रिसर्च स्कॉलर से कि वो वैलिडिक्टरी के लिए भी आए, जुड़े वहां ऑफलाइन जो हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं। जी, खास करके अंजलि किसी और? आनंद जी कहाँ पर हैं? योग्य पिता के योग्य पुत्री जी, भी अच्छा। नहीं बोल पा रही हैं तो बड़ा दुखद है। अच्छा तो जी, अच्छा, बिल्कुल। बोलनी चाहिए। आप जुड़िए। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Please put your viewpoint and your perspective. Sure, ma'am. Anjali, we cannot hear you. दीक्षा या स्वाति, लगता है कोई मैडम। तो ठीक है, प्रोग्राम तब आगे बढ़ाएं, टाइम हो रहा है। जी प्रणाम सर। सर मैंने अपना पेपर नहीं सेंड किया था सर। जी, कोई बात नहीं है। आपने सुना, ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है पार्टिसिपेशन का। जी जी मैम। हाँ, और थैंक जी, अब मैं अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस आभासीय मंच पर आकर अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। फॉर्मर डायरेक्टर खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, a profound scholar in his own way, a medievalist. प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी, आप हैं हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं? सर हैं हमारे साथ? अविनाश जी? नहीं मैम, सर अभी नहीं जुड़े हैं। एडेड थे उनकी सर भी जी, उनकी भी कुछ व्यस्तता थी, जैसा कि मैंने कॉल किया तो जानकारी हुई, तो अभी शायद नहीं है। तो क्या मैं अनुरोध करूं अपने अध्यक्ष से और अपने सेक्शनल प्रेसिडेंट से कि वो अपने विचार और उद्गार दें और लोगों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि हम लोगों का तो एक छोटा प्रयास है
कि हम इन विचारों को आगे रखें, और आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं, जो अपने आप में एक पूरी विचारधारा को समझने की जो क्षमता है आपकी, जो अध्ययन है आपका, तो हम चाहेंगे कि आप उन विचारों को लेकर आप इस संगोष्ठी को समाप्ति की ओर जब जा रहा है, तो आप अपने विचार से हमें अनुग्रहित करिए। Sunita, I would just like to speak 2 points before Pramodanand sir says. Okay, you are there. So yes, Anuradha. Yeah, I've been there. I Okay. have to, I'm really sorry. We I have to called out attend a your name, movement, but we didn't get a response. So please go ahead. No, Yes. no. Actually, maybe some days when Yes, please go ahead, Anuradha ji. there was a network problem. I won't be speaking much about it. But actually, there's a seminar organized by college also in the evening on the human rights. Okay. I have to be there. I was here from the right beginning. Okay, thank you so much. Dear all, first, good afternoon, everybody. My regards to Pramodanand sir, Imtiaz sir, if there, and all the senior faculties here, the IQAC, the members of the College of BT College, the Department of Philosophy and History. First of all, I congratulate all of you for organizing a wonderful 2 days international seminar. And unfortunately, I was not physically present there because of college commitment. But sir had given a good insight, and sir, I listened to your lecture. You had covered, I think, all the aspects of Gandhi, and just was not speaking on everything. We think Gandhi in a very positive only. If he had some negative things also, but that the reality which was there as far as when we are talking about revisiting Gandhi philosophy, a lot of speakers had spoken out on the gender issues related to Gandhi. I would just like to say just 2 lines on that, because I think you all have the paucity of time and you all have to go for the valedictory function also. Well, Gandhi is regarded as a true promoter of women's empowerment. We can say on that concept that he advocated actually a complete reform, which we call as Sarvodaya, meaning comprehensive progress. Well, he believed that the difference between men and women was only physical, and he had expressed several times in his writings that in many matters, especially those of tolerance, patience, and sacrifice, the Indian woman is superior to the male. He never had any specific program. He never had a specific program for women as such, but women had been an integral part or role to play in all his program. He wanted the woman to outgrow traditional responsibilities and participate in the affairs of the nation. He said that as long as we don't consider girls as natural as our boys, our nation will not be progressing. Today, we are talking of women empowered and gender issues, but the reality is that the roots of this was sowed by Gandhi years and years back. And today we talk about women working in all the fields and all, but the roots were shown in all the, we can very easily say the roots was actually embedded by Gandhi long years back. He was very, when we talk about gender issues, so he was very perturbed by the lower section of the women's society, the Devdasis, the brothels, and he made elaborate plans for the rehabilitation. In fact, he declared that protecting a woman's honor was as honor as we talk about the protecting cow as such, if we talk. The whole generation of women leaders have come up influenced by Gandhi's vision. And if today in India, so many we see women in all the fields, we can very well say that the seeds were sown during the freedom struggle itself. I think, sir, I never had an opportunity, Pramoda sir, to listen to you earlier. Okay. But I must say, sir, hats off to you, sir. It was a very, very good lecture, sir. I was very impressed, sir. And once again, a very, very congratulations to all the speakers and the organizers for organizing such a wonderful 2 days international seminar. Thank you, Sunita. The honor. Thank you. Thank you. Thank you, Anuradha ji. And I completely endorsing your view. I would once again reiterate that it was a very enriching experience, a learning experience when we heard both our speakers, Professor Pramodanand ji and Professor Sanjay Swankar ji. I'm sorry, I forgot to, but it was also very good. Of course. So, very good. Yes, we would now like to
have your viewpoints, sir, and your observations regarding the seminar that has been organized, sir. So I would like Me? Professor Ji. Okay, okay. Thank you. Ji, thank you, sir. Hello. Hello. सर आपका माइक म्यूट है सर. अब सर ठीक है? unmute- हाँ वॉगल आवाज आ रही है? जी वॉगल सर. अच्छा, ठीक ठीक अविनाश जी, धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि सुनीता जी ने मेरी समस्याओं का समाधान कर दिया है। हर लेक्चर के बाद, आफ्टर एवरी लेक्चर, she had passed her comments, very apt comments rather, which generally a chairperson does. And I would not like to take much of your time because it is already too late. But I will make some observations. Like Samir's paper that was sent to us through Vedika Sinha ji. Samir ji has talked about the Risorgimento, Joseph Mazzini as the progenitor, as the torch bearer of Italian unification, all of us know. Mazzini established Young Italy, like Young India. Mahatma Gandhi fashioned his paper, Young India, after Young Italy. And Gandhi was very much inspired. Rather, Gandhi treated Mazzini as his spiritual guru. So naturally, Gandhi had also Western outreach, you can say. Gandhi had been to England, and Gandhi was well aware with the Western literature, the Western movements which had just happened, particularly the Italian unification and the German unification. So naturally there was, you can say, a close proximity between the ideas of Mazzini. Particularly, I think Mazzini was very close to Subhash Chandra Bose. But Gandhi also owed a lot to Mazzini. Then Vedika Sinha talked about Thoreau's impact on Gandhi. Gandhi, as she has rightly observed, that in his very first book, The Hind Swaraj, Gandhi talks a lot, and his debt to philosopher Thoreau. Thoreau taught him about human rights. Thoreau gave him the idea of Sarvodaya, and Thoreau gave him the idea of civil disobedience. Because due to paucity of time, I will not go at length. Then there were some speakers like Rakhi, then Anuj Kumar, then Dr. Priyanka, then Shreya, so many speakers. And I just forgot about the very great personality around us, that is Professor Sanjay Swarnkar. He has, in fact, supplemented my lecture, because I was getting a bit nervous because I had already taken 80 minutes. And listening to me for 80 minutes is not a small thing. And rightly, Sanjay Swarnkar ji depicted Mahatma Gandhi as a lok neta. From आप कह सकते हैं कि गांधी किस तरह से जनमानस में छा गए। सुनीता जी ने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया था। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन रजनी पामदत्त की बात उन्होंने कही। रजनी पामदत्त called Gandhi as a bourgeois mascot, but in the same line, same vein, he corrected himself by saying that Gandhi was the greatest mass mobilizer on the earth, not in India only. Rajni Pamdatt's canvas was very large, and he was talking about the whole world. And then he says, he compliments Gandhi
as the greatest mass mobilizer, that too from a communist leader of England. Gandhi is being complimented as the greatest mass mobilizer. That was the greatest thing. Gandhi was a Lok Neta. Gandhi's concept of Gram Swaraj, Ram Raj, Gandhi's concept of decentralization, and in fact, one of his disciples, we can say, F.E. Schumacher. Yes. Schumacher was a German thinker. He wrote a book in 1973. Small is beautiful. Small is beautiful. Like Gandhi did not believe in mass production by a few. Gandhi believed in mass production by mass. Gandhi also believed in mass production, but by mass. And then Shreya's lecture was very good. I liked it. Shreya talked about the education system propounded by Gandhi. And again comes Zakir Hussain. The concept of Nai Talim, the Bunyadi Siksha, was enunciated by Dr. Zakir Hussain, our late president. Our presidents used to be very learned persons, like Radhakrishnan, like Rajendra Prasad, like Zakir Hussain, and so many so forth. Later on, we can see the situation in our country. Anyway, Shreya talked about Nai Talim, basic education, and Gandhi believed in basic education based on skill development. Based on skill development, and Gandhi said head, heart, and hand. The features were of the basic education was heart, hand, and head. Head, heart, and hand. बुनिया हम लोग भी शुरू में बचपन में स्कूल में बागवानी करते थे, गांधी के शिक्षा को समझते थे, चरखा को समझते थे. And then Anuj and Jamil and other people, they talked about the Champaran movement. और चंपारण में खादी खादी की बात सुनीता जी आप भी कर रही हैं, अनुराधा जी कर रही थी. मुझे बहुत अच्छा लगा because अनुराधा जी is an expert on that topic. I have read her books and I am very glad that my father's name is there in her book. My father was a student of Bihar Vidyapeeth. Thank you, sir. But I have to need to learn a lot from you, sir. Thank you. No, it's all right. And Gandhi had selected 3-4 people in Bihar to carry forward his reconstruction program, village uplift program, and my father was one of them. I feel proud of that I am a son of a Gandhian, and my father never told lie. He never told lie in his life. And if my father was not even an iota of Gandhi, he could have such a dynamic personality, then I was amazed right from my very childhood that what Gandhi would have been. मैं तो विस्मित हो जाता था, विलक्षण व्यक्तित्व गांधी का. मैंने अपने पिता को कभी झूठ बोलते नहीं सुना जिंदगी में. तो खैर ये सारी बातें हुई, हर एक का नाम नहीं लूंगा. प्रियंका ने भी अच्छा पेपर प्रेजेंट किया और गांधी का जो पैथेटिक आप कह सकती हैं जो कंडीशन था उसको नैरेट किया आफ्टर नोआ खाली. दूसरी बात, सिस्टर सेलिन को भी सुना. सिस्टर सेलिन भी गांधी के कंपैशन पर बात कर रही थी. तो इट इज वर्ल्ड नोन थिंग दैट गांधी वाज ए वेरी कंपैशनेट पर्सनैलिटी. उन कंपैशन में तो कोई दूसरा उनसे नहीं था. मेरे ख्याल से जीसस क्राइस्ट के बाद कंपैशन का दूसरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. Then Niyati Kalp from Ranchi, she spoke very well, but I could not understand. Gandhi never stood for Hindi. To my mind, Gandhi never stood for Hindi. He always wanted Hindustani. Hindustani was a blend of Hindi and Urdu. Here you can see the element of unity in language also. Gandhi was in favor of the creation of linguistic states even before independence. So these were the things. And Gandhi, unfortunately, the proposal for Hindustani was defeated by the adherents of Hindi by 2 votes, by 1 vote only.
in the Constituent Assembly debate. Otherwise, Hindustani would have been our official language or national language, whatever we can say. These are the things. Then Khushbu ji also presented her paper. Many people presented. It's not possible because Sunita ji, you have covered a lot. There is no need of presidential or chairman's comment on them. It's enough. That is all from my side. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Your being here with us means a lot, and you have given credit and much weight to this two-day international seminar with your own perspective, which has so much of depth into it. And it was a learning experience for us to know something more about Gandhi. So we are really thankful and grateful to you, sir. So with your permission, now we can close the session, and with a deep sense of gratitude. Lastly, Sunita ji, please Sanjay hear ji me. also with Sanjay Swankar ji has been here with us. So I express my deep gratitude towards him as well. Imtiaz ji was also there. So I'm grateful for his presence, although he could not join us later for his pressing work. Ji sir, आप बताएं. जी. मैं ये कह रहा था. जी. Let us conclude with the statement of the famous secretary of Mohandas Karamchand Gandhi, that was Mahadev Desai. He wrote, "To live with saints in heaven, it is a bliss and glory. To live with saints in heaven, it is a bliss and glory. To live with a saint on the earth, it is a different story." Oh. So we are busy with the story of a very simple man and very complex man, that was Mohandas Karamchand Gandhi. To understand Gandhi, we need more patience, and we should go through one book. Ultimately, I will suggest by Sudarshan Iyengar. Professor Sudarshan Iyengar is Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth. His book is In Footsteps of Gandhi. And lastly, in his book, he says, "अरे उस बुढ़े को तो याद कर लो, बुढ़ा आ जाएगा, हमारा उद्धार कर जाएगा." Thank you very much for hearing me. Okay, thank you, thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So with the permission of the chair, we now declare the session to be closed. And I'm also very grateful to the delegates, participants, our research scholars who have stayed with us consistently. So I thank you all for being here with us. And Avinash ji, a convener of the seminar, who has been a strong pillar of support for this international seminar and has offered all possible support that we required to make it successful, in the sense that we could deliberate on the issues that we wanted to touch upon. So thank you, Avinash ji. And I thank all the people for their logistical support who have come forward. And with this, with your permission, sir, if we can close the session now. Thank you, sir. Okay. Namaskar, sir. And once Namaskar. again. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, Avinash ji. Thank you, Anuradha ji. Thank you.